consultation, opening doors to justice. This event seeks to facilitate conversations on strengthening access to justice for survivors of sexual and gender-based violence with a particular focus on migrant women. This is a cause that we, at the Migration and Asylum Project, are extremely passionate about. The Migration and Asylum Project, or MAP, as many of you know, is India's first and only law center working on issues of forced migration and displacement. Our work seeks to end the marginalization amongst the most vulnerable communities, that is, the migrants and forcibly displaced persons. We address human rights challenges and ensure grassroots justice. In simpler terms, we want to use the rule of law to benefit those who have the least access to it. MAP has a strong focus on programs that work towards empowerment of women and girls, particularly those who are at risk of sexual and gender-based violence, since 80% of our clients are women and children. We therefore are extremely excited about the discussions that we will have over the course of the next 2 hours, hearing voices from diverse backgrounds, from the grassroots to those echoing in the government and the judicial system. We also look forward to present the findings of our own project. This project aimed at legally empowering and assisting survivors of violence from migrant communities. This project is concluding after a period of 3 years, and we hope that our learnings and insights will help foster a broader conversation towards systemic reform in this space. Without further ado, I'd like to call on Ms. Roshni Shankar, Executive Director and founder of MAP, to give the welcome address and launch the event. Welcome everyone to the event today. As Aparmita said, today, is this fine? Okay. As Aparmita said, today is a very important day for us. It is the 3-year anniversary of a very big and challenging project that we undertook in 2020 in the midst of the pandemic. The project was essentially to, as she said, countering sexual and gender-based violence within the migrant and displaced communities. Now, why do we work specifically with this community? It's because most women and children within this group don't have legal recognition or legal documentation, which exposes them to severe forms of sexual violence, trafficking, and other forms of crime. So that is our focus, is to try to take law to those who most need it. The project was started, like I said, right after the pandemic when we had very strict containment measures. So at that time, MAP's helpline was ringing off the hook. We were getting calls from all our female clients who were telling us that they were sort of caught in these cycles of violence, or they were in situations of extreme exploitation, and they had no access to mainstream systems or supports. We ourselves were helpless because we didn't have access to these settlements because of the containment measures. So the idea behind the project was something very simple. It was to find ways through which we could continue our services, either directly or through community structures which were still functioning at that point of time. So with that, I will give you a brief overview of the project and some of our the impact that it has had. Okay. So like I said, the project had 4 main objectives. The first being legal empowerment. So we wanted to find ways in which we could inform women within the community about their legal rights. And we also wanted to help them identify and report these different forms of violences. The second was for us to build grassroots structures. So this was to see how we can map whatever services are available in the grassroots. So that could be your Asha Anganwadi workers, it could be Mahila Panchayats, it could be one-stop centers, etc. So whichever service was available to them within walking distance, those were the structures we wanted to target and empower. The third objective was digital capacity. Like all of us know, during the pandemic, there was a radical shift to digital platforms. And for a community which is already marginalized, this meant that they would be completely excluded from whatever services or support they were receiving pre-pandemic. And the fourth and the most important objective for us was access to justice. We had to find a way in which we could continue our mission of making law accessible, tangible, and meaningful to the communities that most need it.
So in the last 5 years, how have these activities helped us achieve these objectives? So with the first activity, we focused on setting up legal desks. And when we set up these legal desks, they were done in consultation with our clients. So we operated these desks from Asha Anganwadi centers where women were already going, and it was a safe space for them. We operated them out of women leaders' homes, sometimes community centers, sometimes public spaces. Wherever we could find a safe space for women to sit down and talk and have a conversation with us, we set up a legal desk there. So over the course of 3 years, we've run about 75 desks, and we've counseled over 2,000 women, specifically on sexual and gender-based violence. And apart from that, we carried out a legal awareness campaign, both through traditional and innovative methods. So when I say innovative, it led to us even like training the peanut vendor in the community to shout out information about our desks, or it was putting up flyers in the local mother dairy stores or grocery stores. And in terms of traditional legal awareness sessions, we conducted over 1,200 door-to-door sessions informing women about sexual and gender-based rights as well as right to health. In terms of empowering the grassroots network, we today have a network of over 300 plus service providers. Most of them are within these hyper-local structures. So like I said, these are Asha Anganwadi workers, one-stop centers, and Mahila Panchayats, a number of NGOs, many of whom are here today, and we're looking forward to the consultations. We also trained over 100 Asha Anganwadi workers who were already operating as frontline workers during COVID. So they were the ones who were doing the vaccination drive. So what we did was we integrated legal information or information about sexual and gender rights into their community messaging services. Apart from that, we also identified over 50 community focal points. These were women leaders who we identified. We gave them phones, we gave them training so that they could perform the services of a first-line responder within their settlements. In terms of digital capacity, so this has been quite a pet project for all of us. What we've developed at the end of 3 years is an app called Talika. Talika in Hindi means a list. So the app is essentially a list of all the services women need when they face violence. So this includes legal services, health services, and any other kind of complementary or ancillary service that they might need. So what the app does is that it uses your Google location based on Google Maps. It identifies your location and it connects you to your nearest service provider. Today we have over 2,000 plus active users of the app. The app also has camouflage features because one thing we had to be mindful of is that women often have shared devices. They don't have a device to themselves. So we had to integrate a camouflage feature so that women can quickly exit the app so as to not raise any suspicion. Apart from that, it's specifically designed for women with low literacy levels. So it has both like a written format and it also has an audio feature. And the fourth activity was, of course, working on justice mechanism, something which we've been doing for the last 10 years. So under this, what we did was we created a network of paralegal volunteers and panel lawyers. Again, I can see some familiar faces who've been a part of this program. We have today over 150 paralegal volunteers and lawyers, and together they've collectively made 350 interventions. Currently, we have 23 cases of sexual violence in lower courts. And I think over 12 of them have had some kind of positive decisions, or interim orders or protection orders. In terms of way forward, I think for us to understand how we want to take this project forward, we conducted a 3-month impact assessment session. We went into the community, spoke to our clients, spoke to our different stakeholders to see how we can, what worked and what didn't work in the last 3 years, and what part of the project should we scale and what part of the project we should just not continue with. And the findings of the report are in your files. So those of you who are interested, please do take a look. And if you need more information, we'd be happy to provide that. But to sort of set the context for the discussion today, I wanted to highlight 3 things that are like in the way of learnings or what we think we need to do for the way forward. First is institutional legal aid, and this is something I think a lot of civil society organizations have struggled with. One question we often get is, why do you have your own network of paralegal volunteers or lawyers? There are so many institutional structures who already have this. So starting with DCW, DSLSA, each court has its own panel of lawyers. So why do you have a parallel system?
And that is fundamentally because we don't have channels or platforms where we can meaningfully engage with these institutions, where we can create referral systems, or we can work together to complement the work that they're already doing. So this leads to us expending our resources and reinventing the wheel. The second issue which we would love to discuss during the consultations today is, again, how do we build partnerships within the civil society networks itself? Again, this was a big learning for us during the project. When we first went into the settlements and we wanted to tell women about their legal rights, the first thing they told us is that, listen, that is something which we will discuss later. First, I want my child in school. First, I want access to health services. I want livelihood. And the only way we could address this was through partnerships with other NGOs that were already operating within these settlements. And then that helped us build trust within these communities. And then we could address the more tricky questions of sexual and gender-based rights. This is something which we are deeply committed to building further, and we also have a lot of project material that is available to us today. So we have illustrated legal awareness material, we have the app, we have paralegal volunteer training modules. These are readily available and we are very happy to share that. So if any of you see any synergies with the work that you're doing, please feel free to reach out to us and we'll be happy to collaborate. And the third thing I think is the most important lesson for us is that of community resilience. And the irony of that is that when we went into these settlements, in our concept note, we had written that we are going to build the community's resilience by legally empowering them. This is funding jargon. But I think I can safely say that at the end of the 3 years, we are the ones who've understood the true meaning of resilience, and that is something we've learned from the community. One of the biggest successes of our project has been the work the community workers have done. The number of women we could reach in a month, they could do that in a single day. And it's been a lesson for us to just listen, understand, and contextualize before you go into the field and pontificate about legal rights. On that note, I wanted to give you all a glimpse of the kind of work the community workers have been doing in their settlements. This is one of the many videos of one of our paralegal volunteers, and Kamla ji, and she's here today and she'll be part of the panel as well. So I'll just take 2 minutes of your time. हर महिला को जागरूक रहना चाहिए कि किस प्रकार से कानूनी सलाह फ्री में मिलती है, वो हमारी मैप एनजीओ द्वारा प्रोवाइड की जाती है। मेरा नाम कमला यादव है, मैं सोनिया विहार में रहती हूँ। मैं एज ए पैरालीगल वॉलंटियर काम करती हूँ। पैरालीगल वॉलंटियर का काम है कि वो डोर टू डोर जाकर महिलाओं से संपर्क करे। हर महिला जागरूक होनी चाहिए, अपने अधिकारों का सबको पता होना चाहिए कि हमें अगर कोई भी व्यक्ति या हमारे ससुराल वाले या कोई भी हमें परेशान करता है तो हमें कहाँ जाना है, किस तरीके से अपने केस को फाइल करनी है, उसको हम जो हमारी बहनों को कोई परेशानी होती है, जैसे घर में मारपीट, लड़ाई झगड़ा, टॉर्चर करना, मेंटली टॉर्चर करना और सेक्सुअल हरासमेंट, तो इतना कुछ उन महिलाओं के साथ में होता है, लेकिन वो शांत रहती हैं। हमारी एक मैप संस्था है, उसमें हम काम करते हैं। कोर्ट में आपको एडवोकेट फ्री मिलेगा, वो एडवोकेट हमारे यहाँ पर मैप से हैं, आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। एक महिला को सिर्फ सहारे की ज़रूरत होती है। अगर उसकी हिम्मत बन जाती है तो वो समझती है कि भाई अब मुझे न्याय भी मिलेगा और मैं अपना घर ठीक से बसा पाऊंगी। तो मैं वही चाहती हूँ कि अगर मेरे जाने से अगर उनका काम होता है, वो खुश होती है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत अच्छा काम होता है समाज का काम करना। अगर महिला और पुरुष दोनों में एक समानता होगी तो अच्छे से उनका घर भी चलेगा, अच्छे से जी सकते हैं, अच्छे से वो अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। मैप के साथ रहकर मुझे इतना अच्छा मौका मिला कि जो महिला पंचायत में मैं सिर्फ कम्युनिटी में रहती थी, मैप में आने से मैंने पूरी दिल्ली के जितने भी थाने हैं सबके अंदर मैंने जाके एफआईआर दर्ज कराई, उनको एडवोकेट दिलवाया, उनको न्याय दिलवाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि एक महिला
इतना उत्पीड़न सहन करे एक ना जानकारी लेने की वजह से। थैंक यू। लाइक आई सेड, कमला जी आज हैं और कुछ आशा वर्कर्स भी हैं हमारे साथ ऑडियंस में और कुछ पैनल्स में भी होंगे, तो प्लीज़ feel free to contact them for more information about the incredible work that they've been doing. Now moving on to the segment for which all of you are here, which is the Keynote Address. We have Justice Muralidhar here. We're very honored to have him, and he'll be delivering the Keynote Address for the event. He obviously needs no introduction, but just to go through protocol, I will still do a formal introduction. Justice Muralidhar, as all of you know, is the former Chief Justice of the Orissa High Court. He's within our legal community, he's often referred to as a people's judge because he's authored some of the most landmark judgments which have championed gender justice and have also upheld the rights of minority communities. And most importantly, for people like me who are part of the profession, I think he has single-handedly shown us that sometimes it just takes one person who has a deep commitment to constitutional values and ethos to transform systems from within. So, sir, we're deeply honored to have you, and I welcome you to the stage to deliver the address, please. Where is Priyanka? We have to do first. Thank you. Thank you. Thank you, Roshni. A very warm good afternoon to everyone here. It's good to see some familiar faces too, including Aparna, who's a lawyer in the Supreme Court. I'm amazed at the wonderful work that the Migration Asylum Project has been doing. When Roshni and Tanima invited me to deliver the keynote, they also sent some material, and going through it was very inspiring, actually. This is a difficult area of work to undertake, particularly when you're dealing with people in zones of illegality. As a lawyer, and I'm sure Aparna also has encountered many such cases, when you take up cases of persons in zones of illegality, you need to first be convinced that they are people who are rights bearers. And what comes across in this short video, where Kamalaji is explaining to all of us why it's important to remind people of their rights, is that that vision of people in need of legal assistance has what is, I think, motivated and seen you carry forth successfully your project in the last 10 years and this particular project in the last 3 years. As a lawyer who had the occasion to deal with cases of persons facing forcible eviction, one thing I noticed was the mystification of the law and the legal processes. And I think as a first step, MAP has taken on that challenge to explain in simple terms the legal barriers and hurdles that people are likely to face and help them navigate that space. Your app, for instance, I think is going to be hugely useful to this, the population of migrants and asylum seekers and refugees. I won't go into the technicalities of the differentiation between these terms. I think it's safe to call all of them in one bracket as vulnerable to abuse, vulnerable to being found in the wrong side of the law. So this is a vicious cycle, and this is not unique only to people who are asylum seekers or refugees. I would say this is the intersection of law and poverty. We've witnessed this kind of a scenario in the last 75 years in this country, and perhaps even earlier, with rapid urbanization, with people in villages and rural countrysides forced to be relocated, displaced, seeking opportunities in the nearest cities. The earliest scenario of that was painted so vividly by Bimal Roy in Do Bigha Zameen. That scenario continues to play out in this country. So the same vulnerabilities that the migrant population faces, the internally displaced also face. They also face vulnerabilities of exploitation, of being non-documented citizens. We have many internally displaced populations as well, living in the same space. And therefore, for instance, this one term, Bangladeshi, can be just applied across, to various sets of populations.
So, and that's a dangerous word from the point of view of the state. Always the argument of national security, sovereignty is all put forth, and with greater vehemence when it comes to immigrants, refugees, asylum seekers. There was a stark contrast. I think there's a reference to it in one of your written material in how courts responded to this issue. We had a response in relation to Rohingyas in Jammu and Kashmir from the Supreme Court, where this, in an interim order, whatever protection could have been given was actually denied. But in stark contrast was the order of the Manipur High Court, presided over by Chief Justice Sanjay Kumar, who is now in the Supreme Court. The case goes by the name of Nandita Haksar versus State of Manipur, where the Rohingyas stuck in Manipur were trying to reach Delhi. They just need a travel permit to come to Delhi to apply with the UNHCR for refugee status. And that was being denied to them. And you have a wonderful judgment tracing the rights of the refugee population, of the illegal immigrants, under Article 21, as you know, of the Constitution, which provides rights to everyone, not particularly to citizens or documented persons. That was a welcome, a change in an approach from the Indian judiciary, and one hopes that that will be the tenor of the judgments we will see in future. But for which we need to have greater awareness. We need lawyers trained, and I think MAP is doing a wonderful job in that aspect, training lawyers, sensitizing lawyers, orienting them, because the bar in India doesn't prepare the lawyer for human rights work. I think we need to accept this fact. Lawyers within the bar, whether it's the Supreme Court or the High Courts, who are coming forth to volunteer to take up cases of this nature in the intersection of law and poverty, are far and few in between. We need to develop that kind of a bar, and I don't know if MAP realizes, but you're really doing yeoman work, yeoman service in developing that bar within the sea of lawyers that India has. That orientation is going to help a long way. Many of these young lawyers who are on your panel, they're going to realize that what they are learning through these kind of cases is going to stand them very well in the longer run when they deal with more complex cases, even regular run-of-the-mill cases in courts. This intersection of law and poverty brings us to the intersection of criminal law and the Constitution. And for lawyers in this audience, this is a neglected area in our study of law and the Constitution. We seem to think that a person being produced in the police station, and then being produced before a magistrate, and then being remanded, these are all only within the realm of the procedural criminal law and not the Constitution, when in fact it is. So every act of the policeman in detaining a person, every act of the magistrate in remanding a person, they're performing an act that is controlled or structured or regulated, as you may put it, by the constitutional scheme. We have a whole chapter in the Constitution on fundamental rights, and there's an Article 22 which actually spells out what can and cannot be done by even a magistrate or a police officer. That understanding has to seep in. So every one of the panel lawyers I would urge to go back through the jurisprudence of Krishna Iyer. He's given a large number of judgments in this area of intersection of criminal law and Constitution. And I think if MAP can help bring out, even in simple texts, for even the community, to make them understand that they are rights bearers. They're not at the mercy of anyone. They're not definitely at the mercy of the lawyers or even MAP, because here we are only helping them actually assert their own rights wherever they are. Most illegal migrants and asylum seekers believe that they do not have rights, and that whole notion needs to change. They may not have the capacity to engage with the formal legal systems, to engage with the law enforcement agencies. One of the first barriers people encounter, even internally displaced migrants, is the law enforcement agency. The policeman is invariably the first point of contact with the legal system. And that is always not a pleasant encounter at all. It comes with a lot of coercive power, and it deters people from engaging with that system.
which is why in India we still have what we call a robust parallel system. People readily engage with the parallel system rather than engage with the formal system. Now I think MAP is in the twilight zone, helping people navigate from the informal system to the formal system. And that may not always have good results because they work, the dynamics of the two work very differently. Ironically, the non-formal system has its own sets of rules. As a person invested deeply in legal services, legal aid, this came to me through those years of realizing how communities have their own way of dealing with the formal systems and how they find their spaces outside of that formal system to be able to survive. And they have a greater degree of skill in navigating the non-formal system than they have the formal system. Law enforcement officers, particularly policemen, engage fully in the non-formal system. There's a whole dynamic that works there. Very much of it is non-documented. So I would urge MAP to even do this. Since you see people in both these systems very clearly, you see how both the formal and non-formal systems work, it's important to document it. I think in the context of Lima in Peru, Hernando de Soto did a pioneering study on the parallel system, where he found that there was a greater degree of assurance about protection of rights to shelter in the non-formal system in Lima than it was in the formal system. Like typically, let's say there is housing for EWS communities in the DDA, the Delhi Development Authority, and there is space to be found in an informal settlement or a slum or a shanty somewhere in Delhi. There's a greater chance that you might find something in the slum or shanty for the money that you have to spend than you would if you invested that in the DDA kind of a housing. So the assurance to someone coming into the city, in whichever capacity, of some security, some space, that assurance is not lent by the formal system, but more by the informal system. So as NGOs, as persons working in this area, we must be deeply conscious of this, and I'm sure you are. I'm sure you've encountered these situations time and again. What we're trying to do, I think through all these efforts, like you said, you really wished that the formal legal services authorities actually engaged with this. I would definitely support that idea completely. I think there is a need for all these legal services institutions to actually shed all the inhibitions they may have in engaging with people whom they think are in the zones of illegality. You will not find legal services authorities saying, we will set up desks in the nearest slum, in the nearest settlement, because they don't engage with people in zones of illegality. This is very similar to the UN system. The UN system engages only documented people whom countries recognize as refugees. So you have to sign on to something. So if India has not ratified the Refugee Convention, you can't have persons declared as refugees merely because they happen to belong to another country. So this navigating the formal space and informal space is what the real challenge is about. I think the freedom that an organization like MAP has, that it has no constraints. It does not have to say, I will engage only with persons who are recognized by the formal systems. It will engage with persons because they are persons. They are rights holders, and they cannot be deprived of those basic rights to decency, to dignity, and to safety and security. So the work is a tough one, and I think we must all here applaud MAP for the wonderful work it's been doing amidst all these challenges, to find that space for yourself, to be in the community, to give them the assurance that things will work out, there is a better tomorrow waiting for you. That kind of an assurance is what keeps people going. In one of your videos, I could see how that worried look on the Afghan woman's face changed when she started holding the UNHCR card which you helped get her. And that's priceless. That one photograph explains the value of MAP's work. It explains the value of every work done by the paralegal volunteer, by a Kamlaji, by any lawyer who's on the panel of MAP, because this is something that no amount of fees in a paying case can get you. This joy, this sense of satisfaction. Aparna will agree with me. The cases where you work the hardest and probably don't get paid at all,
but at the end of the day, you're able to get justice for the person for whom you're working, that gives you far more satisfaction than any other thing, being a professional. I'm sure that's the case with many of your MAP volunteers who've been doing tireless work and selfless work. I had an occasion to deal with the work done by ASHA workers. This was the case of Lakshmi Mandal versus Deen Dayal Hospital. The case involved 2 women who died giving birth to children, and the issue was on maternal mortality and the availability of the schemes. You talked of the Talika app and how it tells people what are the schemes available to each of them. And all those schemes failed those 2 women. They were not even internally displaced women. They were just poor women in the urban metropolis, such a huge metropolis where people can just disappear without a trace, without even knowing about it. So there was an occasion to reassert the interconnectedness between all your international instruments, the constitution and the laws, to recognize that these women were rights bearers and not living at the mercy of the law enforcement agencies or of the system. So I would wish MAP all the very best. I would ask questions of MAP. I would very interested to know, I think I had some conversation with Roshni on this. This population of illegal immigrants, from what we see on the net, whatever information is out there, largely comprises Bangladeshis, Afghans, the Myanmaris now, the Rohingyas. So how do you overcome the communication gap? Because much of the stories that people wish to say is lost in translation. Even as lawyers, I can tell you, the client comes to your chamber and narrates, let's say, all that's happened with the client for the last, let's say, 6 months or 1 year. And as a lawyer, you quickly start sifting. You'll say, okay, these are facts which are relevant for this point, relevant for that point, relevant for this point. So you're already dissecting facts because you're looking at presenting it as a case. And very often some finer points get lost. And it happens in court. Now, as sitting as a judge, having been as a judge for 17 years, when I ask the question of a lawyer, I can see the client sitting behind, eager to get up and answer. But our system doesn't permit a direct dialogue between the client and the judge. The intermediary has to be the lawyer. Those are the moments you realize that something's been lost in translation. The lawyer did not consider this particular fact to be important, did not put it in the petition, it's not there before the judge, and the judge wants to know about it. So this listening very carefully to what people have to say will be a very important part, I'm sure, of your work. And documenting all that they have to say, again, is very important. Many of them may come without a shred of paper. I think that's not an unusual scenario. So how do you help people build their documentation? I know hawkers in Delhi, they look for that police drive where they will be forcibly evicted, because they get what are called parchis. The parchi is actually like a challan. It tells you that you've committed an offense. That is so valuable for the hawker because it acknowledges that he was present there. See, ironically, that's how documentation works. So the more such parchis they collect, it strengthens their right to claim, a space somewhere down the line, 5 years down the line, 10 years down the line. So that's how they engage with the system. So policemen also understand this. There's an economics behind this. There's a social reality behind this. And the language of communication is so different. So the spaces that the poor navigate in the city, including a space to stay for the night. In Delhi, I don't know how many people are aware, and I don't know how the scenario has changed. Come the winter months, there's a whole trade that goes on in blankets. And that trade is controlled by the police, I'm told. So there is no space that is free for the poor. There is likewise no space that is free for the illegal immigrant. They pay for everything. So that is something that we don't easily acknowledge, which is why they go into all these perilous activities, including sex work. Many of them get easily exploited because of this reality. So documenting all of this,
That is the personal narratives of persons. You can anonymize the names to protect their privacy, but documenting those individual stories of how you built up the dossier or whatever, the file for the person, to enable the person to be recognized in law as a person. That will be very interesting for future approaches to changes in the law, which we all desperately need to make, because movement of populations across countries has become a routine phenomenon. And for India, if you go back in history, I think we are an entire country of migrants. If you really go back to the ancient times also, this was a country which always had migrants, immigrants. So, and it is only political legal borders that have classified as somebody as an illegal migrant, an internal migrant, or a refugee asylum seeker. These are all legal classifications. But otherwise, the factum of movement of populations across the globe is an ongoing phenomenon of human civilization itself. So whether now it's the Ukraine-Russian war, which has again caused a huge upheaval and movement of populations across, or earlier the Syrian refugee crisis, or other kinds of natural disasters leading to movements, the Rohingyas, persecution in their own country. This is not going to abate. My sense is it's only going to grow. I think countries need to change their approach in how they will deal with these issues. Many countries are both receiving countries, that is host countries, and destination countries. I mean, countries to where, so India is one such instance where we are a destination country for many in the South Asian region, but we have populations of Indians going abroad as well, and in very, very perilous conditions. So I wish both these narratives get tied up somewhere, so that we have a more humane approach to how we treat immigrants coming into our country without easily labeling them as illegal. There's much to be learned from the work done by MAP, the documentation that you will do and put out for others to study. While I agree with you that you will need to engage with the formal legal systems in a limited sense, may I suggest that you also engage the university law clinics. Most law universities, and there are many private universities as well, have law clinics. And it will be useful for the younger generation of law students. And this goes back to the days of Campus Law Center. Although I was not a student, I've heard of the pioneering work done by Professor B.B. Pandey, where he had an orientation course for students by taking them to beggars' homes and beggars' courts to get them oriented in the law and poverty discourse. So likewise, I think the young students, law students in law universities, if they can be engaged through the university law clinics, and usually those clinics have a professor supervising their work, so that might be a useful way of engaging, because there is a mandate for the legal services authorities to engage with these university law clinics. So that could be one route through which you engage with the formal system. I really hope the formal legal system opens up, because today it is seen as a court annexed system and not as a standalone autonomous system. But I think it should be that, the standalone autonomous system that does not restrict the availability of legal services to what happens in the courts, but has an expansive notion of what justice is, so that it engages with several actors and not just the law enforcement agencies. I could go on and on, but I just want to compliment MAP for the wonderful work that you've been doing. I want to compliment each of the paralegal volunteers, the advocates on your panels, and the ASHA workers like Kamalaji, who've, I think, contributed so much to reaching out to the populations from other countries in India and in Delhi. And that's what enriches the plurality and inclusivity of this country. You keeping those constitutional values alive through your work, and therefore you deserve a very, very big hand. And I'm going to join in giving you such a big hand. Continue doing a good work. It's invaluable. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir, for your really kind words. And also, I'm sure that every person present here feels very inspired after listening to you. So can we have another round of applause for Justice Muralidhar?
Okay, so now we move to the next segment of the program, which is a panel discussion. And now I will invite all our esteemed panelists on the stage. We'll start with our first panelist, Ms. Kamla Yadav, who we have all seen as a star of the video that was played before. Kamla ji, aap stage pe aa jaiye. Kamla ji is a paralegal volunteer with nearly 30 years of community experience. Paralegal volunteers like her form a crucial bridge between legal services and the community. They assist in legal counseling, awareness sessions, and other activities. She has previously worked in the Mahila Panchayats, organized by the Delhi Commission for Women, and also with numerous NGOs. She has diverse experience, having worked on employment, health, and other social issues. Her passion, however, lies in helping women, particularly survivors of sexual and gender-based violence. Our second panelist is Ms. Seema Bharadwaj. Seema ji. Hi. Seema ji is an ASHA worker based in Khajuri Khas. She was originally trained as a journalist. Following her work with the newspaper, she worked as a teacher at a private school. Community-focused, she realized that her passion lies in working directly on the ground and supporting marginalized communities with their health and psychosocial challenges. She began her journey as an accredited social health activist, or as we know them, ASHA workers, registered with the Delhi government in 2017. ASHAs are an all-women cadre of first responders primarily tasked with making available health-related services to women and children. Now, I would like to call on stage Aanchal and Riya, who are also our paralegal volunteers, which trained by MAP, and they work with us in the communities. I request them to present the mementos to Kamla ji and Seema ji. Okay, photo page. Now I call on our third panelist, Ms. Neelam Narang, who has nearly 30 years of experience in handling cases related to crimes against women, is currently serving as an additional public prosecutor and is a legal advisor at the Delhi Commission for Women, where she heads the Rape Crisis Cell. In this capacity, she manages a team of approximately 70 lawyers and over 50 counselors, offering crucial psychological and legal support to survivors of sexual assault. Previously, she has also worked in the Chief Minister's office, where she was responsible for handling grievances against the Delhi police. She also had the additional charge of being vigilance officer at the Director of Prosecution for the Government of Delhi and as amicus curiae by the Honorable Lok Ayukt in cases against public functionaries. Can we have a round of applause for Ms. Neelam Narang? Now I'd like to request Nasir, who is also our paralegal volunteer, to present a memento to Ms. Narang. Thank you. Now we have a final panelist, Ms. Aparna Bhatt, who is an esteemed Supreme Court advocate. She has over 30 years of practice as a litigator, policy developer, and researcher. As a litigator, she has represented the government and private institutions, as well as offered pro bono support to individuals who cannot afford legal services, civil society organizations, and government commissions in both the High Court and Supreme Court of India. She has also supported victims in criminal trials. At the DCW, she helped create an alternate system of representation of victims in cases of rape and trafficking. Some of her landmark judgments relate to acid attacks, provision of compulsory free treatment, banning over-the-counter sale, trafficking, and sexual violence, amongst many others. She has worked extensively in developing policies on childcare, sexual harassment at workplace,
rehabilitation of victims of trafficking with a special focus on economic rehabilitation and sexual health. Can we have a round of applause for Ms. Bhatt? Now I'd like to invite Mr. Archit Krishna, who is our legal aid lawyer. He's associated with MAP and is on the panel, to kindly present the memento to Ms. Bhatt. Now I would like to call on Ms. Tanima Kishore. She is the project coordinator of the Prevention of Sexual and Gender-Based Violence team. She will be the one moderating the panel discussion. Hi everyone, thank you so much for being here, and thank you all the panelists for joining us today. So it takes a lot of courage for a survivor of violence to come forward, speak, and seek support. And the question to be asked, and what we are going to discuss here today, is the system equipped and ready for that strength and courage that the woman shows? We've all heard of re-victimization, we've heard of victim-centric approach, and it's just that these conversations have not become irrelevant yet. Even today, as Justice Muralidhar pointed out, there is still a normalization of violence, there's a normalization of acceptance, and as Seema ji and Kamla ji will tell us today, औरतों को इतना मुश्किल होती है बस बताने में कि वो जो सह रही हैं वो गलत है. उनको सबसे पहले ये बताना पड़ता है कि उनके पास वो अधिकार हैं जिसके बारे में अभी उनको पता है उनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन उसके लिए उनके पास कोई रेमेडी है, उनकी मदद करने के लिए कोई तैयार है. ये जो प्रोसेस है ये इतना क्रूशियल होता है, क्योंकि उसके बाद का जो ऑर्डियल है, जो हम लोग उसके आगे उसकी बात करेंगे, वो नेक्स्ट स्टेप होता है. सबसे पहली स्टेज यही होती है कि कैसे वो बढ़ के मदद मांगें. तो हम लोग यहीं से बात शुरू करेंगे सीमा जी से. सीमा जी जैसे कि अपरमिता ने बताया, खजूरी खास में आशा वर्कर के तौर पे काम करती हैं. और सीमा जी बताइए थोड़ा कि आप किस समुदाय के साथ आपकी बातचीत होती है, किस तरह से आपका काम दिन पे दिन आपको उन औरतों के साथ. हाँ मैम, जिस समुदाय में हम लोग रहते हैं यहाँ पर छोटे छोटे गांव और कस्बों से जहाँ आर्थिक स्थिति नहीं है, उनकी बहुत आर्थिक स्थिति ख़राब है, तो वह इस क्षेत्र में आकर रोज़गार की तलाश में रहते हैं कि वो अपने जीवन यापन कर सकें. ज़्यादातर बहुत गरीब लोग होते हैं और आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ख़राब होती है. जहाँ वह रहते हैं वहाँ पे उन पर कोई रोज़गार है नहीं, इसलिए वो रोज़गार की तलाश में यहाँ पर आकर रहते हैं. और जैसे कि हम लोग बात करें कि बहुत सारे लोग दिल्ली के नहीं होते, बाहर से आते हैं, छोटे छोटे गांव और कस्बों से आए हैं. ये तो ज़्यादातर दिल्ली से, बाहर से, अन्य राज्यों से आए हुए होते हैं. तो यहाँ पे इनका कोई संपर्क नहीं होता. जहाँ से ये आते हैं उन पर कोई साधन नहीं है अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए. इस बारे मजबूरी में ये लोग यहाँ आते हैं कि इनको आर्थिक साधन मिल सकें और अपने जीवन यापन कर सकें, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें यहाँ. जी. और जब आप औरतों के साथ उनसे मिलती हैं, उनसे बातचीत करती हैं, तो किस तरह की परेशानियाँ वो आपसे शेयर करती हैं, किस तरह की बातें आपको बता पाती हैं? मैम, मेरे को आशा वर्कर में 15 साल हो गए यहाँ पे करते हुए. तो लोगों से, औरतों से मेरा बहुत संपर्क रहा है, क्योंकि हम उनका जो सहायता करते हैं वो हर तरह से सहायता करते हैं. वो हमारे पे विश्वास रखती हैं, तो वो अपनी जो परेशानियाँ अपने परिवार से भी साझा नहीं कर सकती हैं, वो हम लोगों से साझा करती हैं. इसमें उनकी प्रजनन संबंधी उन्हें परेशानियाँ आती हैं, जो कि वो अपने पति से, आसपास से, क्योंकि उनका यहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं रहता, वो हम लोगों से शेयर कर पाती हैं. या उनके साथ में किसी भी तरह की घरेलू हिंसा हो रही है, या वो समाज में किसी भी तरह पीड़ित हैं, तो वो अपना दर्द जो है वो हम लोगों से शेयर कर पाती, क्योंकि हम लोगों को उनसे 15 साल से लगातार जुड़े हुए हैं. और भी बहुत सारी समस्या आती हैं उनके सामने. आर्थिक समस्याएं हैं. यहाँ जब वो आते हैं तो उन पे, जब वो अपने क्षेत्र को छोड़ के यहाँ आ रहे हैं, तो उन पे बहुत समस्या आती हैं. जैसे उन पे कोई आईडी नहीं होती,
तो जो सरकार सुविधाएं दे रही है, या छोटी छोटी सुविधाएं भी, जैसे कि आंगनवाड़ी में बच्चों को खाना मिलता है, पर अभी जो सरकार ने कर दिया उसमें आधार कार्ड कर दिए, वो सुविधाएं भी नहीं ले पाती जो उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। छोटी छोटी समस्याएं उनके लिए बहुत बड़ी बन जाती हैं ये। जी, और जैसे कि हम लोग भी जब आशा वर्कर्स के साथ काम करते हैं तो हमने ये नोटिस किया था कि क्योंकि आशा वर्कर्स कम्युनिटी की औरतों के साथ दिन पे दिन बातचीत करती हैं, एक फेमिलियर फेस होता है, वो उनके साथ एक कंफर्ट बनाती हैं कि हाँ, इनको हम अपने जो हमारे साथ जो मुसीबत है वो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए आपके साथ वो अपने घरेलू हिंसा की बातें भी खुल के कर पाते हैं। हाँ मैम, क्योंकि हम लोग सबसे पहले उनसे विश्वास बनाते हैं, क्योंकि हम इतने सालों से उनको सहायता दे रहे हैं, किसी भी तरह की होती है तो वो हमारे पे विश्वास करती हैं। तो जो घरेलू हिंसा का मामला वो किसी और को नहीं बता पाती, क्योंकि हमारा विश्वास बन चुका, तो वो हमारे को शेयर करती हैं। और सबसे पहले हम उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि हम आपकी बात पे विश्वास भी करेंगे और आपकी जहाँ तक हो सकेगी हम मदद भी करेंगे। यह सब सोच के ही वो हम लोगों पे विश्वास करके हमें अपनी वो बातें बता देती हैं जो किसी और को नहीं बता पाती। जी, और किस तरह से आप उनकी मदद कर पाती हैं अगर कोई महिला आपको बताती हैं कि उनके साथ घरेलू हिंसा हो रही है या किसी और तरह की हिंसा हो रही है? वो डरती हैं, सबसे पहले तो उन्हें डर होता है। पता तो सबको है कि हाँ हम पुलिस की सहायता ले पाते हैं, पर उनको जो अंदर उनके डर है वो उन्हें वहाँ तक पहुँचने नहीं देता। तो हम जब उनके साथ खड़े होते हैं हम कहते हैं कि हाँ आप सबसे पहले आप पुलिस विभाग में जाओ, आप उसकी कंप्लेंट कराओ, आपके लिए आसरा भी है। यदि उनका पति या उनका परिवार का कोई भी सदस्य उनको निकाल देता है या उनके साथ मारपीट करता है तो वे सोचती हैं हम कहाँ जाएंगे। तब उन्हें ये नहीं अधिकार पता होता कि ऐसे बहुत सारे आश्रय बने होते हैं जहाँ वो रह भी सकती हैं और अपने केस भी लड़ सकती हैं, पर उन्हें अपने अधिकारों के बारे में ज्ञान ही नहीं है। तो हम उन्हें बताते हैं कि आप पहले पुलिस से मदद लीजिए। पुलिस अगर आगे कुछ नहीं करती है तो हमारे पास में बहुत सारी जो संस्था होती है, गैर सरकारी संस्थाएं जो होती हैं, NGOs होती हैं, उसमें भी फ्री केस लड़े जाते हैं और आपको रहने की भी सुविधा दी जाएगी। तो हम उनको, हमारे पास PLV होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ होता है जो उनको पूरी तरह मदद कर पाता है। जी, और कुछ इसके बारे में आप बताएंगे कि जो NGOs हैं और भी मैप है, उसके अलावा और भी बहुत सारे संस्थाएं होती हैं इन सेटलमेंट्स में, तो उनका क्या रोल रह सकता है आपके काम में, आपकी मदद करने के लिए, उन औरतों की मदद करने के लिए? बहुत सारी NGOs हैं जो इस पे काम करती हैं, पर सबसे पहले उनको डर लगता है कि वो थाने में अकेले जाएंगी, उनके साथ कोई है नहीं, तो इस मारे वो कदम नहीं उठा पाती। तो ऐसे में जो NGOs हैं उनको साथ चलना पड़ेगा उन महिलाओं के कि वो हम कंप्लेंट तुम्हारी साथ में चल के कराएंगे, तो उनको एक सहारा मिल जाएगा। और उन्हें कानूनी निःशुल्क सुविधाएं देनी चाहिए, जिससे कि वो, क्योंकि उन पास इतना पैसा नहीं होता, वो इस मारे भी डरती हैं कि कोर्ट में केस डालेंगे, हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम कहाँ से केस लड़ेंगे। तो ऐसी संस्थाओं को निःशुल्क सेवा करनी चाहिए, उनकी कानूनी मदद करनी चाहिए और उनके आगे आना चाहिए। और जहाँ तक है कि सिर्फ महिलाओं के साथ में ही अगर हम काम करेंगे तो कुछ नहीं होगा। सब एक आधी आबादी जो है हमारी पुरुष समाज की है। जब तक हम पुरुष समाज को ये नहीं समझाएंगे कि आप समानता करो, महिलाओं पे अत्याचार बंद करो, तब तक कोई समानता नहीं आएगी, ना घरेलू हिंसा रुकेगी। तो सबसे पहला काम हमें पुरुषों के साथ मिलके भी सारी NGOs को उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, तभी घरेलू हिंसा पे और उनके अत्याचारों पे रोक लग सकती है। थैंक यू सीमा जी। थैंक यू। आपने बहुत सारी एकदम सही बातें बोली, एंड दीज हैव आल्सो बीन आवर की लर्निंग्स ड्यूरिंग आवर प्रोग्राम, हाउ टू मेक इट अ मोर होलिस्टिक अप्रोच टू इन्वॉल्व मेन एंड मेल कम्युनिटी मेंबर्स इन दीज एफर्ट्स। एंड जो आपने बोला कि पुलिस स्टेशन जाने में ही, अकेले जाने में घबराहट होती है, वहीं पे, इसीलिए अब मैं कमला जी से बोलूँगी कि हमें थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। कमला जी, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में भी देखा, हमारी पैरालीगल वॉलंटियर हैं, and she has been instrumental in helping a lot of women in filing police complaints and assisting them through the very cumbersome process that can be if you go alone. तो कमला जी, थोड़ा सा आप बताइए कि जब आप
किसी औरत के साथ पुलिस स्टेशन जाती हैं उनके लिए कंप्लेंट फाइल करने उनके साथ, तो किस तरह के आपके कैसे चैलेंजेस रहते हैं, आपका क्या वहाँ पे एक्सपीरियंस रहता है? जब भी मैं थाने में जाती हूँ पीड़िता को लेके, तो पुलिस का व्यवहार बहुत ख़राब होता है। वहाँ पर कोई लेडीज़ पुलिस नहीं होती, वहाँ पर हेल्प डेस्क पर भी जेंट्स पुलिस होती है। हाँ, उनका नेचर व्यवहार इतना वो होता है कि बेचारी एक तो परेशान, और फिर दूसरा उनकी आवाज़ को सुन के वो घबरा जाती है, वो अपनी परेशानी भूल जाती है। तो उस टाइम पर मैं पैरालीगल उनके सामने पेश होती हूँ। मैं कहती हूँ देखिए ये तो बहुत परेशान है और आप इनके सामने इस तरीके से पेश हो रहे हैं, आप इनकी कंप्लेंट लिखिए। किस तरीके की कंप्लेंट? उनका बिहेवियर ऐसा होता है। मैंने कहा ये बहुत परेशान है, रात भर इसके पड़ोसी ने इसके गालियाँ दी हैं और मारने की चैलेंज दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, और ये रात भर सोई नहीं है, और सुबह इन्होंने हमें कॉल की, हम आए हैं और इनकी कंप्लेंट लिखनी है आपको। तब हमें देख के, क्योंकि उनको पता है कि ये DCW में काम कर चुकी हैं, ये पैरालीगल हैं, हमारी टचिंग उनके साथ में बहुत अच्छी है और हमें हमारे पर विश्वास भी करती हैं कि भाई हाँ अगर ये वहाँ से आई है तो इनकी कंप्लेंट लिखनी पड़ेगी, तो उनकी कंप्लेंट लिखी जाती है। तो ये मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे जाने से उनकी कंप्लेंट लिखी जाए। अगर कोई भी पीड़िता जाती है तो पीड़िता की कंप्लेंट उनको खुद लिखनी चाहिए या उनको बोलना चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए कि ठीक है आप अपनी कंप्लेंट हमें दीजिए और हम एक्शन लेंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जब हम जाते हैं जब भी उनकी कंप्लेंट को दर्ज कराते हैं और उनकी रिसीविंग में बहुत टाइम लगाते हैं, लेकिन हमें देख के कि भाई ये तो एज ए वर्कर एम्प्लॉय हैं DCW की, तो फटाफट हमें रिसीविंग देते हैं और एक्शन भी लेते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए और उनका काम होना चाहिए, क्योंकि निडी फैमिली होती है और वो घबरा जाती हैं। जी, और जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, सीबा जी ने भी बताया, जो बाहर से लोग आते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी होती है, उनके साथ जब आपका इंटरेक्शन होता है तो उसमें क्या आप स्पेसिफिक चैलेंजेस थोड़ा मैंने कंस्ट्रक्शन वर्कर पे भी बहुत काम किया है, और जितने भी प्रवासी मजदूर होते हैं उनके पास, वो अदर स्टेट के होते हैं, कोई बिहार का है, कोई यूपी का है, कोई बरेली का है, कोई कहीं का है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं और वो दिल्ली में आ गए और दिल्ली में वो काम कर रहे हैं, वो रेंट पे रह रहे हैं। अगर वो बाय द वे उनके साथ में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, पड़ोसी से हो गई या किसी मालिक से हो गई, तो अगर वो थाने में जाते हैं तो उनकी कंप्लेंट दर्ज नहीं करते हैं। वो कहते हैं सबसे पहले अपने एड्रेस प्रूफ लेके आओ। उनके पास कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं होता, कोई आईडी उनके घर की होती है, कोई यहाँ का आईडी प्रूफ नहीं होता, वो बेचारे वहीं के वहीं रह जाते हैं। और हम अगर जाते हैं पैरालीगल और हमारी पहचान है और हम थाने में जाके बोलते हैं कि ये हमारे सामने ही रेंट पे 5 साल से रह रहे हैं और इस टाइम जो है इनको ये परेशानी हुई है, इनके डॉक्यूमेंट्स बाहर के हैं, तो आप इनकी कंप्लेंट दर्ज कीजिए। तो फिर हम उनका रेंट एग्रीमेंट नहीं है, कोई बात नहीं, उनका किसी भी मालिक का, मकान मालिक का बिजली का बिल लेकर उनके एड्रेस को लेकर हम उनकी FIR दर्ज करा देते हैं। और थोड़ा सा आप और बताएंगे कि किस तरह से आपकी इंगेजमेंट रहती है वहाँ NGOs के साथ और बाकी पैरालीगल वॉलंटियर्स, जो हमारे यंग पैरालीगल वॉलंटियर्स आज यहाँ मौजूद भी हैं? देखिए, मेरी सभी NGOs से टचिंग रहती है। मैंने काफ़ी NGOs में काम किया है। मैंने कमीशन फॉर द वुमेन DCW में भी काम किया है, 2 NGO में, और 4-5 NGO में वैसे भी किया है, महिला पंचायत में काम किया है। कम्युनिटी में भी मेरी बहुत अच्छी गुडविल है, हर पर्सन से मैं अच्छा मिल के चलती हूँ। मुझे दूसरे की परेशानी सुनने में बहुत अच्छा लगता है और मैं एज ए सोशल वर्क काम करती हूँ। मुझे मेन तो ये है कि जो पीड़िता होती है उसकी बिल्कुल भी थाने में सुनवाई नहीं होती है, एक तो ये होनी चाहिए। और NGOs जो हैं इतनी हेल्प करती हैं। हमारी दिल्ली महिला आयोग में आप जाके देखिए, तुरंत जैसे ही किसी के साथ में कोई भी ट्रेजेडी होती है, फटाफट हमारी फिरदौस खान है, यानी जो भी हैं, फटाफट कंप्लेंट को लेती हैं और उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेती हैं। अगर वो केस फाइल करना होता है, DLSA के लिए एडवाइस करती हैं, लेटर देती हैं। और छोटी छोटी NGO हमारी खुली हुई हैं, जैसे एज ए पैरालीगल पंचायत खुली हुई हैं। तो पैरालीगल कम्युनिटी में जाके हमने बोला कि भाई इस तरीके से इनको काउंसलिंग चाहिए, तो हमने उनका NGO में
पंचायत में जाके नाम रजिस्ट्रेशन करा दिया, उनकी कंप्लेंट दे दी, तो फटाफट टीम आती है, टीम आके और उनकी सारी प्रॉब्लम को डिटेल्स लेकर उनकी कंप्लेंट को लेती हैं, लेने के बाद में उनको बुलाती हैं। अगर वो काउंसलिंग करके समझौता हो जाता है, दोनों पार्टी को बुलाते हैं, अच्छे से 1-2 हियरिंग पर ही उनको समझौता कर देते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि जगह जगह पर हमारी पंचायत खुली हुई हैं, छोटे छोटे जो काम होते हैं वो हमारी पंचायत के थ्रू हो जाते हैं। बड़ी बड़ी एनजीओ हैं, जैसे हमारी मैप एनजीओ है, इसमें हम जाते हैं, मान लो हमें एडवोकेट करना है, तो एडवोकेट के लिए हमें पैसे नहीं है, तो फ्री एडवोकेट के लिए हमारे पास DLSA है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, उसमें सरकारी वकील मिलेगा, और जो पीड़ित होता है वो परेशान हो जाती है, वो कहती है कि टाइम पे टाइम दिए जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी फटाफट ये केस फाइल हो जाए और मेरा घर सही से बस जाए। तो इस तरीके से हमारी मैप यहाँ पर तुरंत पैरालीगल को भेज के कंप्लेंट, तुरंत CAW भेजकर उसकी समझौते की रिपोर्टिंग, और अगर उसको एडवोकेट की ज़रूरत है तो एडवोकेट हमारे पास ऑलरेडी है ही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैप फटाफट काम करते हैं, मैप NGO, और बहुत अच्छे से काम करते हैं। मैं इनके साथ 2 साल से जुड़ी हूँ और इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और बहुत आगे बढ़ गई हूँ। हर कमिश्नर से DCP ऑफिस, ACP ऑफिस, SHO, IO जो भी होता है, मैं एकदम फ्रैंकली उनके साथ में बात करके पीड़िता को शांत करके पीड़िता के केस को सॉल्व करा देती हूँ। थैंक यू कमला जी। मेरा अगला सवाल अपर्णा जी से है। अपर्णा जी, आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस है औरतों के साथ, यू बीन वर्किंग वेरी क्लोजली विद अ लॉट ऑफ सर्वाइवर्स ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, and there are so many schemes and there are so many laws in place, but we still get to hear about victims suffering through the process. What are your thoughts on that? What are the gaps which are still remaining? Please. Thank you, Tanima. I'll speak in a combination of Yes, English please. and Hindi. हिंदी मेरी बहुत अच्छी है, आपको पता चल जाएगा अभी, हाँ, जैसे जैसे मैं बात करने लगती हूँ। So in this question answer session, kind of a pattern, we don't get to thank our benefactors, people who called us, so that's implied. So and let MAP not get offended that we didn't acknowledge them. So इनका जो सवाल था about the navigating through the judicial process, it's a challenge. When I was hearing Justice Muralidhar and हमारी आपस में जो बात होती है constantly, we feel, at least I personally feel, so important that you talk of big things, but by the time we get to that place where we actually are able to make sure that a person is getting a benefit, there's really so little that the person gets, and that after a very, very long battle. I have never understood why justice delivery system for the most vulnerable is so challenging, because there is really no justice delivery. You just have a sense of, okay, I've done something. I've not had, I mean, तो 30 साल से मैं काम कर रही हूँ, this is my 31st year. I've not had a single case in all this time where I can tell myself that I've achieved everything I planned to achieve in the case. And sometimes some cases have gone like 10 years, 15 years, we continue to fight that case. But ultimately we get something. As I'm not going to say I'm not successful. I've got a lot of relief, but it's not to what I wanted to get. And हमारी जो cases होती है वो they're so obvious. जैसे अभी सीमा जी ने बताया और कमला जी ने बताया, हमारा जो हम लोग मांगते, जो कोर्ट से जो मांगते, they're extremely obvious and minimal. ऐसा नहीं कि हम बहुत सारी चीज़ मांग रहे हैं, minimal. If a woman wants to have sustenance for herself, being a victim of domestic violence, and that's kind of writing on the wall, उसमें समझने की क्या बात है, उसमें समझने की कोई चीज़ है ही नहीं. आपको भी पता है कि बच्चा है तो बच्चा स्कूल जाएगा, तो स्कूल जाने के लिए फीस, you have to pay fees, और खाना भी खाना होता है, दवाई भी चाहिए होता है, कपड़े भी चाहिए होता है. I mean, these are all common sense things, which even judges know, right? It's not as if judges don't know that a child, a poor woman's child also needs clothes, just like any other child. But unfortunately, it doesn't come to them so easily. Because when they dole out
maintenance of like 2,000 rupees in a place like Delhi, you look at them and you wonder, do you even understand what you're saying? 2,000 rupees mein aajkal kiraya bhi nahi hota hai for about a week. What is that meaning? So things like that. And whoever is, this is something I always tell even my colleagues, and I tell everyone who doesn't understand, and also tell people who think women are abusing the system, because aajkal, you know, the discussion is that the narrative that's being built is women are abusing 498A, that's law relating cruelty to women by the in-laws and husband, is being abused. So we need to get rid of that section. I tell all of them that just visit the court once. Spend half a day in the family court. You will understand the way the challenges women are facing. Like, I just not told you 2,000 rupees is the relief that may be given as an interim relief after 4 months, to realize that 2,000 rupees is the kind of challenges a woman has to face subsequently. You go on a Friday to any of these family courts, magistrates courts, the number of cases of execution pending, and you know, I don't go to those courts so often, but once in a while when I do go, now execution arrears pending for 3 years. Oh, 3 saal se, what is that woman doing to protect herself? And some of them come with children, and then I've seen some lawyers looking at them in a lot of disdain, ki ek bacha yahan pe shor kar raha hai. No, nobody thinks that where will she leave the child and go? If she has to go to court to attend a hearing, and जैसे आप कह रहे सारे, मैं ये नहीं कहूँगी कि लीगल एड की वकील खराब है, अच्छे हैं, लेकिन जहाँ पे पैसे कम मिलते हैं वहाँ पे ध्यान कम होती है. That is the reality. We have to accept that. So lawyers also distinguish where a person who is not paying them enough fees, the attention given to them is far less. So this woman is really not in a position to give fees. Even the legal aid fees is not so lucrative. So obviously the attention given to her is much less. So which compels her to go to court. She has to be in the court. I don't know how many cases there are women telling the judges कि हमारा वकील अभी आने वाले हैं. And then the case just gets adjourned. She spends an entire day there. So these logistics, unfortunately, no system has been able to address. Because we have an act. Act says within 4 days she has to get an interim order. It's impossible. Forget 4 days. I'll be very grateful if within a month she gets an interim order. It doesn't happen. Even a month, it doesn't happen. And there are these impracticalities that we have to deal with. And one thing I would like MAP to take up, and there's something in my long association with DCW, I told them it didn't happen. And I can tell anyone who's listening, nowadays nobody listens, but that's besides the point. Anyone who listens, you see, why do women tolerate violence? There are 2 big reasons. And by violence, I don't mean marpeet. Marpeet is passe. Now, violence has taken various other dimensions. No, people don't hit to be violent to me. They can do so many other damaging things. Just as Muralidhar said something, I got this from him, saying that most asylum seekers think they don't have rights. Most women think that it's okay to be hit by their husbands. I mean, that's our upbringing. We think it's perfectly fine. And when you go to the police station, कमला जी, सीमा जी, आप अभी मारने के बाद पुलिस वाले में कोई बात नहीं, एक बार तो मारा है ना, it's okay, just move along. And that's one. These are these paradigms, and these are all things that we have to live with. So when she actually goes to challenge this, women who challenge the system are anyway labeled. That is one thing. And a lot of times women don't go because they have to look after their children. Many of them think, what do I do with my child? And the biggest inadequacy of our system is there are very few spaces which are able to house a woman and a child. They will house either the woman or the child. And I don't think I'm a mother, I don't think I want to be separated from my child even for a day. And in a distressing situation, not even for a moment. Now, how do we expect women who are facing violence to just leave their homes and also leave their child? And unless the system is able to address that, provide a space for a family, because ultimately when she has to go out and she has to seek support and she has to seek shelter, she wants shelter for her and her children. And that is something that has not been met by any system, any government. We have some small civil society groups who are able to provide that, but that's really nothing. It's really nothing. So many women continue to suffer this violence or abuse or whatever we call them because of the fact that they don't know where to go. So, and the justice system doesn't acknowledge that. So if I have to not stay in my home and I don't have resources, I have to be provided with those 2 things. And that is not provided at all. We may have these rare cases where
I'm not for a moment saying that there aren't some women who abuse the law. There are such people. But there are such people who abuse the tax law also, right? People abuse all kinds of laws. So women abuse this law also. But a majority of the women are actually the receiving end. And the number of men, sometimes you get calls from people and they ask you, you don't know what to tell them. And I personally do not like to give them false assurance that 15 days ke andar aapka case khatam ho jayega. It's really, I'm being dishonest if I say that. So these are some of the challenges in custody. I mean, I can go endlessly on it. And Tanima had warned me that, you don't have that kind of time. So maybe that for another day. But the challenges, the practical challenges of the system, and the fact that the limitation of the system to provide me actual relief, that remains no matter what the statute is. Yeah. Thank you so much. And I'm glad you brought up the issue of misuse of the law. I mean, I know it's a very sensitive issue, but it's when we talk about the marginalized section of the society and the migrant community women who are so intimidated by the system, and it takes them so much strength to even speak out that they need help for anything. Misuse of the law is a very far-fetched concept for them. So we also have to look at that class dimension as to who is misusing the law and who is suffering because there is a whole prejudice against women who are seeking that help. A lot of our cases, जिसमें सीमा जी, कमला जी पुलिस स्टेशन जाती हैं, that is not some trivial violence about, I mean, I'm not saying a slap is a trivial form of violence, but the violence can be as severe as, it amounts to, it has all the elements of attempt to murder. And those are the ingredients, those are the kind of offenses made out, and yet it is seen as a domestic violence case. So that is the struggle, which is a constant struggle, and thank you, ma'am, for bringing that up. नीलम जी, आप अगर थोड़ा सा बताएंगे कि आई थिंक सबसे बड़ा जो चैलेंज इस तरह के केसेस में है वो वॉल्यूम है. मतलब देयर आर सो मेनी केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन जनरल, एंड DCW बीइंग एट द सेंटर ऑफ इट, रिसीविंग कंप्लेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर. How is the commission addressing that volume? What are the services that are available through the commission? Yeah, thank you, Tanima. Thank you very much for inviting me and giving me an opportunity to talk about the institutional support by DCW. DCW means Delhi Commission for Women, which is well known by the name Delhi Mahila Ayog. I'll just take a minute. Just two months ago, I went to the passport office. I had applied for the renewal of my passport. And when I was there, passport office is also at ITO, and my office, DCW's office, is also at ITO. The concerned officer just asked me, ma'am, where are you working? I said, I'm working with Delhi Commission for Women. Where is that? I said, Delhi Mahila Ayog. Oh, अच्छा, आप दिल्ली महिला आयोग में काम करते हैं. Okay, okay, ma'am, ठीक है. So I came to know about this. कि okay, means it's not necessary everyone knows about Delhi Commission for Women. So what I would say is, जैसे आप दिल्ली पुलिस का, दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ है. What I would say, I really feel proud to be a part of Delhi Commission for Women. The way Delhi Commission for Women is working, मैं अभी आप सबको बताऊंगी. मैं ये कहूँगी कि दिल्ली महिला आयोग सभी महिलाओं के साथ हर वक्त सदैव तत्पर रहता है काम करने के लिए. जिस तरह सीमा जी ने बताया, कमला जी ने बताया कि इनको बहुत, क्योंकि बिकॉज दे हैव बीन वर्किंग ऑन द ग्राउंड, दे आर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन विद द अग्रीव्ड वुमेन. पुलिस स्टेशन जाते हैं, उनको मुश्किल होती है, कंप्लेंट्स वगैरह रजिस्टर नहीं हो पा रहे. तो मैं एक सबसे सिंपल बात आप सबको बताना चाहूँगी. वी हैव आवर वुमेन हेल्पलाइन, दैट्स 181. तो जैसे दिल्ली पुलिस को व्हाट आई वुड सजेस्ट कि देयर इज़ नो नीड ऑफ मेकिंग एनी कंप्लेंट टू 112 नाउ, विच वाज अर्लियर 100. दिल्ली पुलिस की अब जो हेल्पलाइन है वो 112 है. वहाँ करने के बजाय अगर आप 181 पे कॉल करेंगे तो व्हाट आर 181 सिस्टम इज़ वर्किंग, इट्स वर्किंग राउंड द क्लॉक 24/7. रात को भी अगर कोई कॉल आती है, और staff and the एम्प्लॉयज़ आर देयर टू अटेंड द कॉल्स.
181 is linked with we have 66 counselors on the ground and we have the vehicles. These counselors, supposing कोई भी complaint आती है, किसी को भी, अभी आप सोच रहे हैं कि बहुत सारी वुमेन को ये प्रॉब्लम आती है कि हम लोग कहाँ पर जाएं, कैसे करें, पुलिस के पास कैसे जाएं. Please suggest to them, just give a call at 181. The system will automatically come into place. 181 वाली कॉल इमीडिएटली हमारे कंसर्न काउंसलर को रेफर होती है. कंसर्न काउंसलर हु इज़ देयर इन दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट अलॉन्ग विद द व्हीकल, वो इमीडिएटली या तो उस वुमेन के पास पहुंचेगी, उस अग्रीव्ड वुमेन के पास. शी विल टेक हर टू द पुलिस स्टेशन, या पुलिस स्टेशन में उनको सजेस्ट करेंगी वहाँ ले जाके उनकी FIR रजिस्टर करने, वॉट एवर द हेल्प शी नीड्स. अगर उसको कुछ मेडिकल एड चाहिए, सो आवर काउंसलर इज़ देयर एज अ सपोर्ट पर्सन विद हर. अगर उसको पुलिस में कुछ चाहिए, FIR रजिस्टर करानी है, उसको कुछ लीगल एड की ज़रूरत है, या वी हैव बीन रिसीविंग सो मेनी कॉल्स इन द डोमेस्टिक वायलेंस वाले में, इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन होता है. आई मीन वी जस्ट गेट अ कॉल कि मुझे मेरे ससुराल वाले बहुत तंग कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो उसका बस एक हमारे पास फ़ोन नंबर है एंड शी जस्ट नीड टू गिव द एड्रेस. जैसे ही 181 पे कॉल आई, इमीडिएटली द कॉल इज रेफर टू द कंसर्न काउंसलर एंड 181 वाले दिल्ली पुलिस को, बिकॉज दिस इज अ केस वेयर द इंटरवेंशन ऑफ द पुलिस इज इमीडिएटली रिक्वायर्ड. तो वो 181 से वहाँ से पुलिस को और हमारी काउंसलर मिल करके उनको जा करके वहाँ पे उनके घर पे विजिट करके, बिकॉज पुलिस इज़ देयर, उस लेडी को रेस्क्यू कराया जाता है और फिर उसको जो भी नेसेसरी हेल्प है वो दी जाती है. सो माय सजेशन इज़, एक ये सबके दिमाग सबके उसमें रहता है कि हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा, हमें लॉयर करना पड़ेगा, हमें पैसा देना पड़ेगा. सो एवरी वुमन इज़ एंटाइटल टू फ्री लीगल एड. नाउ जो 181 से हमारा गया, वहाँ से FIR, हम केस को बीच में नहीं छोड़ रहे हैं. दैट पर्टिकुलर केस वी रिसीव अ रिपोर्ट फ्रॉम द काउंसलर. हमारे पास यहाँ पर DCW में पूरी टीम है जो मॉनिटर कर रही है. दैट केस इज़ रजिस्टर्ड इन द कमीशन, दैट इज़ प्लेस्ड बिफोर द मेंबर ऑफ द कमीशन, फाइल बनती है, देन द फॉलोअप इज़ टेकन. अब उसके बाद FIR के बाद इफ़ शी रियली वांट्स कि मेरे को इसमें कुछ सेटलमेंट चाहिए, तो हम लोग उस मैटर को टेकअप करके, सपोजिंग इट्स अ डोमेस्टिक वायलेंस एंड शी रियली वांट्स टू लिव विद हर फैमिली, तो वहाँ पर उसके साथ उनको उसकी इन लॉज को बुला के काउंसलिंग की जाती है. और इफ़ शी वांट्स कि नहीं आई वांट सम लीगल एक्शन, तो वो हम वो CAW सेल में रेफ़र कर देते हैं. और इफ़ इट इज़ वाइट तो पुलिस को रेफ़र करके, इफ़ शी नीड्स अ लॉयर देन DCW खुद ही DLSA के ऑफिस के साथ कोऑर्डिनेट करके उसको, और वी हैव अ वन लीगल क्लिनिक ऑल्सो. सो लाइक DLSA का 1-2 लॉयर्स हमारे पास ऑलरेडी वहाँ पर था. सो शी नीड नॉट गो टू वेरियस डिफरेंट प्लेसेस. उसको लॉयर भी हम DCW से यहाँ से मिल जाता है थ्रू DLSA. उसके एज अ सपोर्ट पर्सन हमारी काउंसलर है. वॉट एवर द हेल्प शी नीड्स दैट इज़ डन. सो मेरी कमला जी और सीमा जी से ये है कि आप क्योंकि ग्राउंड पे काम कर रहे हैं और बहुत सारे आशा वर्कर्स और पैरा लीगल वर्कर्स, तो प्लीज़ जस्ट वाइडली पब्लिसाइज अबाउट 181. ठीक है. सबसे पहले तो अवेयर यही करते हैं कि 181 पे कॉल कीजिए. ठीक है, मैं बस 1-2 मिनट लूँगी. डेली मैं डेटा बताना चाहूँगी. डेली हमारे पास कम से कम 2000 कॉल्स आ रही हैं 181 पे. लास्ट ईयर का मेरे पास डेटा है जो जुलाई 22 टू जून 23, टोटल नंबर ऑफ कॉल्स जो हमने रिसीव की हैं दैट वाज अराउंड 6,30,288 कॉल्स, जिसमें केसेस थे मैक्सिमम केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के. उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट विथ नेबर्स, देन सम रेप केसेस, पॉक्सो के मैटर्स, सेक्सुअल हैरेसमेंट केस, सम किडनैपिंग, देन द साइबर क्राइम ऑल्सो. तो सबसे ज़्यादा केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के हैं और उनमें से बहुत सारे केसेस में हमने FIR रजिस्टर कराई हैं CAW सेल के थ्रू और बहुत सारे मैटर्स कोर्ट में पेंडिंग हैं. उसके बाद बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि मेरे हस्बैंड खर्चा नहीं दे रहा, तो उसको मेंटेनेंस का केस डालना है, तो उन सब के लिए आपको कोर्ट में केस डालना पड़ेगा. सो दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ DLSA थ्रू DCW. सो वी हैव बीन डूइंग दैट. Thank you, ma'am. Ma'am, one thing which I wanted to ask with regard to the migrant communities is that a lot of these women who come from other states
क्योंकि वो उनका दूसरे शहर में परिवार हो सकता है, कई बार उनके पति कहीं और किसी दूसरे स्टेट में होते हैं, वो यहाँ होती हैं. Can you tell us a little bit about coordination between different state commissions of women? If she has, like, if she wants to get some complaint registered, you want to know about that? Any kind of coordination, like if she is here but the husband is in another state. No. What are her grievances? That has to be seen. So first of all, like DCW, she can come over like in person. She can make a complaint. आकर के वो सिर्फ बताएगी वहाँ पर. अगर वो लिखना नहीं जानती तो वो पूरी हेल्प मिलेगी. Whatever her grievances, those grievances are addressed through DCW. In case कुछ ऑफेंस उसके साथ कमिट हुआ है और फिर तो कोई जिस तरह कमला जी ने अभी कुछ बताया कि कुछ वो पुलिस वाले डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, तो मैं उस चीज़ को कवर करना चाहूँगी कि डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत अगर किसी के साथ ऑफेंस हुआ है तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है. वाई डज द पुलिस वांट द एड्रेस इज़ ओनली फॉर द रीज़न कि उसको अगर कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, सो दैट हैज़ टू बी डन. अगर उसके पास आधार कार्ड नहीं है, कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं है और पुलिस आपको कह रहे कि हम FIR रजिस्टर नहीं करेंगे, तो वो गलत कह रही है. हाँ जी, यस. सो फिर तनिमा जी, आपने क्वेश्चन किया कि अगर उनके हस्बैंड बाहर हैं और कुछ उनको कोऑर्डिनेशन करना है, तो हमारे पास दूसरी स्टेट की जो कमीशंस हैं, तो वी हैव अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन विद देम. सो वट एवर द ग्रीवेंसेस आर देयर, वी जस्ट टेक दोज ग्रीवेंसेस इन राइटिंग. वो हम यहाँ पर ले करके वी फॉरवर्ड दोज कंप्लेंट्स टू द कंसर्न स्टेट कमीशंस और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से फॉलोअप भी लेते हैं. तो लास्ट ईयर का जो डेटा हमारा बाहर के दूसरे स्टेट से भी जो केसेस आए थे, दोज आर अराउंड 11,187 केसेस. थैंक यू. लास्टली, इफ़ यू वुड लाइक टू शेयर, जैसे जो हमारा NGO है या और भी जो ग्रास रूट NGOs हैं, हाउ कैन दे सपोर्ट द प्रोसेस, हाउ कैन. देखिए, हमारे दिल्ली महिला आयोग के साथ अभी कोई 62 सेंटर्स ग्रास रूट लेवल पर हैं. देर आर अराउंड 52 NGOs, बट दे आर वर्किंग विद दिल्ली कमीशन एज महिला पंचायत. सो कम्युनिटी से रिलेटेड अगर कुछ भी इशू है उस पर्टिकुलर एरिया में, इफ एनी अग्रीव्ड वुमन, शी कैन डायरेक्टली गो टू द महिला पंचायत एंड वी हैव इनफ स्टाफ ऑल्सो. देयर इज़ वन कोऑर्डिनेटर एंड 4 लीगल पैरालीगल वर्कर्स इन द महिला पंचायत. तो उनके केसेस, जिस तरह कमला यादव जी ने बताया कि इन्होंने भी महिला पंचायत में काम किया है और दिल्ली महिला आयोग के साथ जुड़ी रही हैं, तो वहाँ से अगर वो वहाँ पे सिर्फ महिला पंचायत गई, वहाँ से उनको असेस करके उनका FIR रजिस्ट्रेशन कराना है. इफ़ इट इज़ अ पेटी एंड ट्रिवियल मैटर, तो वो वहीं पर ही सॉल्व हो जाता है. जितने भी केसेस आते हैं, ईच महिला पंचायत जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो हर केस हमें DCW में रेफ़र करते हैं. हमारे DCW में भी एक फ़ाइल बनती है जिसमें अगर कुछ केस थोड़ा हीनियस है तो उसकी मॉनिटरिंग थ्रू DCW होती है. थैंक यू. Thank you so much to all the panelists. I think what was important was to get perspectives from people who have interacted with the survivor at the different stages of her journey. So thank you so much for sharing all your experiences. If anyone from the audience has any questions or comments, I'm sure the panelists would be happy to answer them now. मेरा सवाल कमला जी के लिए है. कमला जी, आपने बताया कि आपके क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं और उनसे डील करते हैं. मैं थोड़ा आपके CAW सेल्स के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है वो अगर आप शेयर कर सके. देखिए मैम, जब मैं CAW सेल के लिए जाती हूँ उनके केस की डिटेल को फाइल कराने के लिए, तो सबसे पहले वो ये कहते हैं कि आप थाने से स्टैंप लगवा के लाओ. ये मैंने कहा थाने से तो आए ही हैं हम, थाने से स्टैंप लगी हुई है जी, और हमें CAW सेल में भेजा है. बिठा लेंगे, वेट कराएंगे. वेट कराने के बाद में पैरालीगल की नो एंट्री, ओनली पीड़िता जाएगी अंदर, और उसके बाद में फिर उनकी जो भी उनको मिलते हैं ASI, उनके साथ में बातचीत होती है और फाइल दर्ज हो जाती है.
नेक्स्ट डेट जो है फिर वो देते हैं। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि मैं पंचायत से आई हूँ और मैं अपनी पंचायत का नाम भी बता रही हूँ। नहीं, यहाँ पर एनजीओ का कोई काम नहीं है। अब वो बेचारी पीड़िता, उसको तो घबराहट हो रही है कि मैं आई कहाँ हूँ, नई जगह पर लेकर गई हूँ मैं उसको। सारी बात तो, सारी डिटेल तो मेरे पास है ना उसकी। तो मैम इस तरीके का उनका बिहेव मुझे नहीं समझ में आता। वो बेचारी घबरा रही है, परेशान हो रही है, उसकी कोई सुनता नहीं है। और बिठा लेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे तू लड़ाई झगड़ा करती रहती है, तू ऐसे मत किया कर। ठीक है, जाओ, लिख ली हमने आपकी कंप्लेंट, अब अगली डेट आपको ये मिली है। मैं जाके नीचे पूछती हूँ, मैंने कहा क्या हुआ? इस तरीके से मुझे धमका के भेज दिया। तो मैम ये एटीट्यूड मुझे अच्छा नहीं लगता। कितनी बार तो मैं खुद गई हूँ, मैंने कहा ऐसा है आप अच्छे से इनसे बात करो। एक तो ये पीड़ित हैं, परेशान हैं, इनको घर से इतनी समस्या हो रही है, ऊपर से आप इनको डरा रहे हो, इनकी सुन नहीं रहे हो और ऐसे कर रहे हो कि जैसे पता नहीं आपने क्या इसके ऊपर एहसान कर दिया, अगली डेट को आना। तो ये CAW सेल का मुझे उनका बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आता। जबकि वो खास करके सहायता के लिए बनाई गई हैं। जी, जबकि वो खास करके सहायता के लिए बनाई गई हैं। जबकि वो सेल बनाया गया है वुमेन सेल, महिला हेल्प के लिए जी। और हमें पैरालीगल की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं होती है। हमें कहते हैं गेट से बिल्कुल बाहर बैठ जाओ, हम रोड पे ही बैठते हैं। और उस बेचारी को पहले 1 घंटा बिठाए रखेंगे, सुनेंगे नहीं सुनेंगे, ठीक है, टाइम आएगा तब, चाहे 2 बज जाएँ 3 बज जाएँ, उसको चाहे कितना भी परेशानी हो रही हो। कुछ तो मैं प्रेग्नेंट को लेके गई हूँ, प्रेग्नेंट की भी नहीं सुनते हैं, कहते नहीं बैठे रहो, जब आपका नंबर आएगा तभी आना। सर ऐसे नहीं, ये वुमेन हेल्प है, यहाँ पर मदद कर रहे हो आप, इसकी परेशानी हो रही है, इसको हॉस्पिटल भी जाना है, कोई नहीं सुनता। तो मैं CAW सेल से भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मीडिएशन में अपने आप भेज देते हैं बिना राजी के। वो अगली कह रही है कि भाई मेरी यहाँ काउंसलिंग करो, मेरे पति को बुलाओ, पति डेट पे नहीं आ रहा, 3-3, 4-4, 5-5 डेट हो गई, पति नहीं आ रहा और उसको वो हर डेट पर अपने पहुँच रही है। और फिर उसके बाद में कहते हैं ठीक है आप जो है नंदगिरी मीडिएशन सेंटर में चले जाना, वहाँ आपका हस्बैंड आए, वहाँ भी नहीं आ रहा। वो परेशान हो गई, परेशान होकर कहती है कमला जी आप रहने दीजिए, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरी कोई सुनवाई नहीं होगी। फिर हम उनके पास में जाते हैं, हम कहते हैं नहीं, हम फिर सीधा दिल्ली महिला आयोग ले गए, वहाँ से फिर उनको अटेंड किया, वहाँ से उनको DLSA के लिए भेजा गया, वकील को अटेंड किया। जब कोर्ट में केस फाइल हुआ तब उनके हस्बैंड आते हैं। यानी CAW सेल से कुछ भी उनके ऊपर इतना भी इम्प्रेशन नहीं पड़ता कि पति को बुलाया जाए। अब मुझे तो लगता ही नहीं है कि वो फ़ोन भी करके बुलाते होंगे, क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ मैं कहती हूँ क्या हुआ, मेरे पति को बुलाया ही नहीं, मेरा पति आया ही नहीं, उसने एप्लीकेशन लगा दी है, वो बीमार है, वो ये है, वो तो पीड़िता बेचारी 6-7 डेट तक वो परेशान हो जाएगी। तो मैं CAW सेल से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इससे तो बढ़िया दिल्ली महिला आयोग जाएं, वहाँ से उनकी कंप्लेंट बने, DLSA जाएं, वहाँ से 35 नंबर कमरे से उनकी फ़ाइल अटेंड हो और उनको एडवोकेट मिले और केस फाइल हो, या फिर हमारा मैप तो है या तुरंत काम करने वाला। थैंक यू कमला जी। Any other questions, comments? हाय मैम, मेरा सवाल मिस नीलम नारंग जी से। तो जब ये 498A के केसेस कोर्ट चल जाते हैं तो इसमें प्रोसिक्यूशन में व्हाट आर द काइंड ऑफ चैलेंजेस जो आप फेस करते हैं? क्योंकि जो हम देखते आ रहे हैं कि 498A में कन्विक्शन रेट जो है वो 10 to 20% के बीच रहता है, जिसके कारण काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि फॉल्स केसेस आ रहे हैं इसमें ज़्यादा। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इसमें क्या चैलेंजेस होते हैं जिससे आप देखते हैं कि जो केसेस है वो एक बार कोर्ट चल जाते हैं तो उनमें कन्विक्शन नहीं हो पा रहा है, और क्या क्या चेंजेस या कुछ जो आ सकते हैं जिससे ये कन्विक्शन रेट बेटर किया जा सके? अगर मैंने एज अ प्रोसिक्यूटर 10 साल से ज़्यादा एक पर्टिकुलर कोर्ट जो कि महिला कोर्ट कहलाती है उसमें मैंने काम किया है, वेयर आई वाज डीलिंग विद ओनली 498A IPC केसेस। और उसमें 498A IPC में बेसिकली दैट्स अ क्रूएलिटी बाय द हस्बैंड। जिन लोगों को नहीं पता मैं वो जस्ट बता देते हैं कि जहाँ पर एक महिला को उसका हस्बैंड और उसके इन लॉज
परेशान करते हैं, वो केस जो अभी ये बता रहे हैं कि CAW सेल में जाता है, CAW सेल से फिर रिकमेंड होके FIR पुलिस स्टेशन में रजिस्टर होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, फाइल बन के महिला कोर्ट में आ जाती है, जहाँ पर 498A का एज अ प्रोसिक्यूटर हम हैंडल करते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, बहुत सारे केसेस जो लो कन्विक्शन रेट का आप बता रहे हैं, एक्चुअली उसमें सबसे ज़्यादा देखिए ये वाले केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ हर स्टेप पर ये कोशिश की जाती है कि दोनों पार्टीज़ के बीच में पहले सेटलमेंट हो जाए। वो CAW सेल के स्टेज पर भी की जाती है कि उसको मीडिएशन में भेजा जाए, उसके बाद कोर्ट में मैटर आता है तो कोर्ट में जजेस भी ये कोशिश करते हैं कि कई केसेस में क्या है कि बच्चे हैं, छोटे बच्चों की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उनको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर मैटर सेटल नहीं होता तो बहुत सारे केसेस में होता है कि उन लोगों ने लगता है कि अब हम आपस में, सेटलमेंट इज़ बेसिकली बाय 2 ways। 1 इज़ कि दोनों पार्टीज़ आपस में एग्री करके और एक साथ रहने लग गई, तो कोर्ट में मैटर्स थोड़े चलते रहते हैं जस्ट टू हैव अ मॉनिटरिंग कि ये आपस में ठीक हैं। उसके बाद वो मैटर कन्विक्शन में कभी भी एंड नहीं होगा, क्योंकि वो उनका आपस में सेटलमेंट हो गया। दूसरा सेटलमेंट होता है कि वो केस लड़ते लड़ते महिलाएं इतनी परेशान हो जाती हैं, महिलाएं या दूसरी पार्टी भी आई शुड से, कि उनको लगता है कि अब हम सेटलमेंट अगर नहीं हो रहा तो हम म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेकर के एक दूसरे से अलग हो जाएं। तो मेरा एक्सपीरियंस है कि मैक्सिमम केसेस में इन्हीं रीजंस के कारण केसेस में उनमें सेटलमेंट हो जाता था, और वो जो विक्टिम्स जब तक आकर के सपोर्ट नहीं करेंगे उस केस में कभी भी कन्विक्शन नहीं होगी। ना तो एज अ प्रोसिक्यूटर आई कैन गेट द कन्विक्शन डन इन दैट पर्टिकुलर केस, नॉट इवन द जजेस कैन पास ऑर्डर फॉर कन्विक्शन। तो जो सबसे ज़्यादा यही है कि उसमें टाइम इतना ज़्यादा लग जाता है, कुछ लोग परेशान होकर के भी सेटलमेंट करके कि ठीक है हम ख़त्म करते हैं, इस केस को हम विदड्रॉ कर लेंगे। सो दैट इज़ द मेन थिंग विच आई फील। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज़? नमस्ते, मैं स्टॉप NGO से हूँ, दिल्ली से। मेरा एक क्वेश्चन है, ये रिलेटेड थोड़ा सा अलग इशू से है। अपर्णा मैम भी है तो मैं अभी बोल रही हूँ कि अभी रिसेंटली मुझे बांग्लादेश से एक केस मिला जिसमें हम लोग रिपैट्रिएशन का काम भी करते, तो उसी के रिलेटेड उसका फैमिली का पूरा डिटेल आया। और जो जिस लड़की के बारे में बात करी वो अभी दिल्ली में एक शेल्टर होम में है। लेकिन इसके केस को लेके जब जनरली क्या होता है, हमें हाई कमीशन जाके उसके लिए TP इशू करना होता है। तो जब मैं केस को लेके हाई कमीशन में बात की तो उन्होंने बोला कि मैडम ये ना रोहिंग्या का केस है। तो बांग्लादेश हाई कमीशन बोल रहे हैं कि उसकी फैमिली बांग्लादेश में है। जब वहाँ से उसका वेरिफिकेशन होकर पूरा डिटेल आ गया, लेकिन हाई कमीशन बोल रहे कि मैडम ये रोहिंग्या केस है, आप इसको अभी रहने दो। मतलब इसका उनका हाई कमीशन का ऐसे मनोभाव है। तो आई थिंक अभी उस लड़की से या फिर शेल्टर होम से अभी मेरी बात नहीं हुई। तो इन केस अगर ऐसे एटीट्यूड है तो इनमें हमें क्या करना चाहिए कि इस केस के रिलेटेड मुझे थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन चाहिए। कि यदि ये कंप्लेनेंट या जो पर्सन है वो रेफ्यूजी है तो उसके लिए कुछ खास चैलेंजेस, कुछ खास चुनौतियाँ, कुछ खास प्रॉब्लम्स है या नहीं, ये शेयर करने से बहुत दैट बी वेरी हेल्पफुल। See, there are multiple issues which you have raised here. I'll just try to answer. And I also want to say at the outset that there is never an answer to these kind of issues. We have to find solutions. And solutions, what is best suited for that person. And use the law for that. Because there are two challenges which Justice Muralidhar mentioned and which we all are aware of. We are not signatory to the Refugee Convention. So because we are not signatory to the Refugee Convention, as a country, we are not bound really to honor all those commitments. So now since that's a big challenge that we are facing, because I have worked with UNHCR, I worked with a lot of agencies. This is the first challenge we faced whenever we dealt with any person who's either seeking asylum or is a recognized refugee of the UNHCR. Because even if the UNHCR recognizes this person as a refugee, it is not as if they have all the rights. It's a discretion of the government to, to
allow them to stay here. Without digressing into that larger issue, let me answer this. And when a foreigner is in our country and the parent country is not accepting them, and this happens, we see, and stop is bold stop se hai, and we all know, especially in cases of sex trafficking that we generally see, is that they don't want to accept this person is from our country. And very rarely they actually accept this person is from our country. So what can we do sitting in India to protect their rights? So if we look at the convention that we are signatory to, we are not signatory to the Refugee Convention, but we are signatory to the CEDAW, we are signatory to the CRC, we are part of the UDHR, and we do honor the UN system within our country. So keeping those in mind, and our Indian courts have repeatedly protected, and the law is that right to life is also available for foreigners. So this is a general principle that we are following. So we have to use these avenues available to us and try to protect her. So what can she get? And when you ask what can she get, if she's extremely vulnerable and she doesn't have any resources, she can access a place to stay. But the downside is that is not a permanent solution for her. A permanent solution for her, if she wants to, is to apply for naturalization, which, I mean, I'm not saying it's easy, it's a huge challenge, but she can attempt to do that. A lot of people have managed to get that. Depending on circumstances, on a one-to-one, I can give you instances of how this has been achieved in the past. And the other one is to try to engage with her, with the consulate or with the embassy to make sure that they allow her to go back, because she needs travel documents, and that they only her home embassy, the parent embassy, can give her. So that is something you need to negotiate. And there it doesn't matter whether she's a Rohingya or any other thing. If her family is in another country and we have something to prove that she's from that country, we'll have to negotiate. But it is, I mean, unfortunately, it is their discretion, but we should negotiate. But in the interim, she can get protection, she can get shelter, and civil societies offer shelter. So does the government shelters. There she's allowed to access. If she is a child, the entire system that is protecting the children in our country is also applicable to them. So they can access education, they can get school, they can again have a safe space to stay. But under some conditions, you need to register with the Foreigners Office and many other things that I'm sure STOP is already doing it. So as I said, there is no answer. We have to find solutions within the existing law for them. Yeah. मैं इसके साथ एक ये बताना चाह रही हूँ. सो फॉर लाइक अपर्णा जी ने बताया अबाउट द शेल्टर्स. If any issue with regard to shelter for any woman, it may be like she may be refugee or whatever it is, she doesn't have any documents, domestic violence victim hai, or she is a sexual assault survivor, she can directly come to the Delhi Commission for Women. People can approach the Delhi Commission for Women. We are working for them. Through Delhi Commission for Women, a safe shelter home will be arranged for her. We have been, like by the order of the High Court, even there are 3 or 4 sexual assault survivors, because in the commission I'm heading the rape crisis cell. There are 3 or 4 sexual assault survivors who right now they are placed in very good shelter homes. And like there they are being given trainings also, the skill development courses are also going on. So till she is repatriated, she can be placed in a shelter home. So I think Delhi Commission for Women is the right appropriate authority where you can approach and the assistance will be provided to her. And there was one question about the refugees, and I think I was having a discussion just 1 or 2 days back with Tanima ji. She had put a question, these migrant women, they do not have any documents. इनको victim compensation scheme के लिए whether they are entitled or not. उस पर मैं थोड़ा बताना चाहूँगी कि अभी हमारे पास Daily Victim Compensation Scheme 2018 की है, which has a separate part for the woman. So government has a separate woman victim compensation fund for women. तो जो refugees हैं जिनके पास कुछ नहीं है, if they are victims of any offense,
मे बी अ डोमेस्टिक वायलेंस 498A का है. Depending upon the mental and the physical injuries, her case can be, application can be made to the concerned DLSA. Matter is taken up there. She is entitled to compensation. Supposing compensation हो गया तो प्रॉब्लम ये आती है कि उसका बैंक अकाउंट नहीं है क्योंकि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है. So there is a clause 11 in Delhi Victim Compensation Scheme that amount, whatever the compensation is granted, that can be disbursed to her by way of cash card. So it's not necessary that she should have some Aadhaar card or the PAN card, and it's very important that she should have a bank account. So for foreigners or for the refugees, we already have this scheme. Yes. FIR has to be, yeah. Yes. FIR has to be there. She may be a victim of sexual assault. If she is a victim of domestic violence, there is a scheme. No, there was a question, if she doesn't have any document, so whether she is entitled, how would the amount be given to her? So that's my question. Thank you. Ma'am, my question is for Neelam, ma'am. Ma'am, जैसे आपने mention किया था कि आपको almost 2000 plus calls आते हैं every day complainants के. And we know that women who approach you or who seek help, they have gone through a lot in terms of traumatic experiences and a lot of psychological repercussions that they face after everything that they've gone through. So I just want to know more about the psychological assistance system in place at DCW. Yeah, that's very good question. Even the psychological support is also being provided by the counselors. You know, we have a number of counselors in the commission. They are also through the NGOs. So we have many NGO partners with various programs. Like I'm heading this rape crisis cell. In the rape crisis cell, I have a specialized counselors. They are around 55, and there are one-stop centers also. You must be knowing सखी के नाम से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, उसमें इन ईच वन स्टॉप देयर आर 11 फंक्शनल वन स्टॉप सेंटर्स राइट नाउ. हर वन स्टॉप सेंटर में 2 काउंसलर्स बाय DCW दे आर असाइंड इन द वन स्टॉप सेंटर. सो वन स्टॉप सेंटर के जितने भी हैं वहाँ पर दे आर देयर फॉर द पर्पज ऑफ काउंसलिंग. एंड सो फार एज द सेक्शुअल असॉल्ट केसेज आर कंसर्न, देयर इज़ अ हाई कोर्ट रूलिंग. कोई भी केस अगर दिल्ली पुलिस के पास आएगा तो सबसे पहले FIR रजिस्ट्रेशन से पहले इट इज़ मैंडेटरी फॉर द दिल्ली पुलिस टू कॉल अ DCW काउंसलर फॉर द काउंसलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर विक्टिम. इट मे बी अ मेजर विक्टिम, इट मे बी अ माइनर विक्टिम. तो हमारे और वो पुलिस 181 पे कॉल करती है और इमीडिएटली हम लोग काउंसलर भेजते हैं. नाउ सपोजिंग सो दे फॉलो अप द केसेज ऑल्सो. उनका मेन काम काउंसलिंग करना है. सपोजिंग हमारे पास कोई और कंप्लेंट डायरेक्टली आ जाती है बाय पोस्ट, थ्रू ईमेल और मे बी रिलेटेड टू सम अदर ऑफेंस, एंड दे रियली वांट ओनली काउंसलिंग, तो वी डू अरेंज द काउंसलिंग सेशंस बाय आवर ओन काउंसलर. इफ लाइक द ऑब्जर्वेशन ऑफ आवर काउंसलर इज कि इनको कुछ और अच्छे से एक्सपर्ट काउंसलिंग चाहिए, सो वी हैव टाई अप विद द अदर एक्सपर्ट एजेंसीज विद NGO partners who are involved in this process. So that's being done through DCW. Right, ma'am. Thank you so much. It's on. Good afternoon, ma'am. I have my question to the official from DCW and the Supreme Court advocate. I'm so sorry. A bit loud, please. Am I audible now? Yeah. Now it's okay. Hello, ma'am. My name is Dilbar Hussain, and I usually work with the refugees and the asylum seekers. So I'll quickly come to my question. I'll speak in Hindi. Ma'am, हम लोग अक्सर बात करते हैं क्या जो लेडीज़ के अगेंस्ट वायलेंस होता है या क्राइम होता है, और हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात नहीं करते हैं. जो साइकोलॉजिकल वायलेंस यूजुअली बीट हस्बैंड और बीट द स्टेट. I'll come to कि स्टेट भी क्या वायलेंस करती है साइकोलॉजिकली. मैम, फर्स्ट I'll come to the state violence is the racism faced by the women, especially from the African community in Delhi, because they are seen as a flesh trader. Their complaints are not taken seriously because they feel like they are at fault and they are filing a false complaint. So there is immense racism within the authorities, within the state, and they don't take the complaints of the African nationals very seriously.
second point, when refugees and asylum seekers, the women from these communities of refugees and asylum seekers, they try to file a divorce complaint. They're very reluctant in filing a divorce complaint because they don't have the documents and they're scared they might get apprehended by the police, or they'll be charged under 14 Foreigners Act and they'll be sent to Nirmal Chaya complex where the women are usually kept detained, those who don't have the valid documents. So how are we moving forward with these issues, and what is the plan of DCW to challenge the racism within the state? I'll forward your issues to DCW. But I just want to ask you a question. Did you really approach, I mean, because you have got these issues, did anyone approach for such kind of complaints to DCW? Because we need something in writing. If we receive even a particular issue and the DCW starts working on it, that may become a larger issue. But have you ever come across this thing, the matter was reported to DCW and no such relief has been granted and nothing has been done? No, ma'am, as I said, obviously I know a few of the cases जहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, but one of the cases वो the lady, she doesn't even want to approach the authorities because she's afraid of approaching the authorities because she does not have any document. She does not want to come to DCW, she does not want to come to the police. So she's scared like anything. So she doesn't want to. So I'll just note down your concern and the issues, and I'll just forward to the concerned authority. We'll just start working over it and we'll just see to it what can be done. Thank you so much. Thank you. नीलम जी, मेरा सवाल भी आपके लिए है. आपने शेल्टर होम्स मेंशन किए थे. कई बार हम देखते हैं कि वो शेल्टर होम्स दे themselves become hubs of sexual violence for women. इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, I agree with it, but not all the shelter homes. The moment we come to know about it, you must have heard about a very important thing which was actually Love Commando. You must have heard about it. That was there in Satyamev Jayate program also. You must be knowing they were giving protection to the couples who really intended to get married. Whenever we receive a complaint, our team from DCW makes a visit in the shelter home, and we have reported the matters to the police, and the FIRs are being registered. But and DCW has otherwise also has inspected so many shelter homes, and the recommendations have already been placed before the government just for the improvement of those shelter homes. But there are others, some good shelter homes, because I have myself visited few of the shelter homes where actually a good work is being done. But if such kind of, because recently one more complaint was received, then definitely if such kind of offenses are happening, then the shelter homes are shut and something is to be done. Then the commission definitely is serious about it, and let's see what happens in the recommendation of the commission. That's already placed before the government. मेरा सवाल सीमा जी से है. तो सीमा जी, आपने बहुत टाइम से महिलाओं के लिए काम किया है. मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कोविड के दौरान, पैंडेमिक के दौरान आपको किन दुविधाओं का सामना करना पड़ा, और क्या वो दुविधाएं अभी तक चल रही हैं? क्या उनका सामना आपको अभी तक करना पड़ रहा है? जी मैम, कोविड के टाइम में तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, क्योंकि कोविड के टाइम में जब कोई भी अपने घर से नहीं निकल रहा था, उस समय हमें जो कोविड के पेशेंट थे घर घर जाके देखने पड़ते थे, उन्हें ढूंढना पड़ता था, उन तक दवाइयाँ पहुँचानी पड़ती थी. उस टाइम में हमारा परिवार भी सेफ नहीं था, क्योंकि हम लोग आते थे, हमें उनसे दूरी बना के रखनी पड़ती थी. रास्ते में हम लोग सिर्फ अकेले होते थे, और उस पेशेंट की हमें 5-5 बार ऑक्सीमीटर से जांच करनी पड़ती थी, क्योंकि उनकी जान बचाना उस टाइम शायद हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी थी. कि
अपनी जान से ज़्यादा हम लोगों को उनकी जान का ध्यान रखना पड़ता था। और उस टाइम में यहाँ तक कि डॉक्टर्स एएनएम्स भी हम लोगों को बाहर रखते थे, डिस्पेंसरियों में बाहर से ही सामान दिया जाता था, वो दूरी बना के रखते थे। और हमारे लिए था कि हमें उन पेशेंटों को देखना है, उनकी रक्षा भी करनी है, उनके परिवार भी उनके पास नहीं होते थे, वो भी दूरी बना के रखते थे। और सबसे बड़ी बात, जो कोविड पेशेंट थे वो खुद इतना डरे हुए होते थे कि उनको हमें बहुत समझाना पड़ता था कि आपकी जान बहुत कीमती है, आपको कुछ नहीं होगा। उनको समझाना उस टाइम में बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि इतना डर था ना उस टाइम कि हम लोगों को भी डर लगता था, बहुत ज़्यादा डरे होते थे। पर अपने से ज़्यादा उनको बचाना पड़ता था कि उनको कैसे समझाएं। रात को 3-3, 4-4 बजे तक उनके मैसेज आते थे कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उनको समझाना नहीं, आप भाप लेते रहो, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाना। एम्बुलेंस भी बड़ी मुश्किलों में मिलती थी हमें, और उनको सेंटर तक, वो क्योंकि जो बुजुर्ग थे वो घर में हम रख ही नहीं सकते थे, उनके घर वाले डरते थे कि हम उनको कैसे सामना करें, पर हम उनका साथ देते थे। और अभी भी बहुत दिक्कतें हैं, क्योंकि उस टाइम में जो लोगों के रोज़गार चले गए, उस रोज़गार की वजह से वो आज तक उन्हें रोज़गार भी नहीं मिले हैं। अभी भी बोलते हैं कि दीदी हमारी नौकरियां चली गई हैं, हम इस टाइम बहुत परेशानी में हैं। उनको राशन की, कपड़ों की, अभी भी मतलब जो उनके रोज़गार, आधे से ज़्यादा लोगों के उस टाइम रोज़गार चले गए थे, खाना भी नहीं होता था, मतलब उनके घरों में खाना भी नहीं होता था। तो हम लोग जा कर के जो कुछ सरकारी सहायता होती थी, उस टाइम कुछ जगह स्कूलों में खाने बांटे गए, तो मैं खुद जा कर के, दयालपुर स्कूल है, 2 महीने तक सुबह जाती थी, खाना उतरता था, सबको अपने हाथ से बांटती थी। उस टाइम बहुत रोना भी आता था कि वो लोग जो पूरे तरह संपन्न थे, जिनके घरों में सब कुछ होता था, वो रोज़ 2000 लोग लाइन लगा के खाना लेते थे। फिर शाम को जाती थी, फिर उनको खाना बांट के आती थी अपने घर में। 11 बजे आती थी मैं वापस। पूरा दिन मेरा उनके साथ जाता था, पर मुझे डर उस टाइम नहीं था, अपनी जान का डर नहीं था। बस ये था कि हाँ, कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान इस टाइम में भूखा ना रहे। लोगों ने जाने की सोची गांव में, पर कोई साधन नहीं था उनके पास। वो समय जो था ना, शायद उस समय ने ये दिखा दिया कि बड़ा छोटा, ऊंचा नीचा, सब इंसान एक बराबर हैं, और सबसे पहले इंसान की मदद करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ा सीख दे के गया है कोविड का समय, मेरे हिसाब से, जो मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। और इसमें मैं एक बार ये भी कहना चाहूँगी कि पूरे कोविड के दौरान सारे आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स ने बिना किसी छुट्टी के पूरे पैंडमिक में दिन रात बिल्कुल मैम, 2-2 बज जाते थे, 2 बजे भी मैसेज आता था ना रात के, क्योंकि उनको घबराहट थी। शायद उनका विश्वास था, मैं जो समझा सकती थी वो समझाती थी, पर उनका विश्वास था कि दीदी है तो शायद हमारे लिए बहुत कुछ है। वो घबराहट में सबसे पहले हमें फ़ोन करते थे। शायद मेरे हाथ में बहुत कुछ नहीं था, पर एक उनको समझाना था। तो वो समय बहुत सारे लोगों की समझाना ही, उनकी काउंसलिंग करना ही सबसे बड़ा इलाज था। हॉस्पिटलों में जगह नहीं थी, हम लोग लगातार हर पेशेंट को वहाँ भेज नहीं सकते थे, ना ऑक्सीजन थी। ध्यान रखती थी फ़ोन में, जहाँ मेरे पे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं, ये ध्यान रखती थी कहाँ पे ऑक्सीजन इस टाइम मिल रही है। जैसे ही मुझे पता लगता था वहाँ पे ऑक्सीजन है, मैं मैसेज करती थी कि वहाँ पर ऑक्सीजन मिल रही है, आप तुरंत जाओ। कोशिश करती थी कि उनके साथ जा भी सकूं, पर उस टाइम मैम इतने ज़्यादा परेशान थे लोग कि बहुत बुरा समय था, पर बहुत अच्छी सीखें भी दे के गया है। जीवन में इतना शायद लोगों से संपर्क कभी नहीं बना होगा जो कोविड ने सेवा का मौका दिया। मैं ईश्वर का मतलब बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे बुरे टाइम में जो लोग बहुत परेशान थी, मुझे वो मौका मिला कि मैं लोगों की सेवा कर सकी। थैंक यू सीमा जी। एक सवाल हमारा एक ऑनलाइन दर्शक से भी आया है। अपर्णा जी, आप अगर उस पर थोड़ा सा करेंगे कि, एंड दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द क्वेश्चन वी गॉट, कि देर इज़ अ जनरल फेयर टू अप्रोच अथॉरिटीज़। तो जो बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, वहाँ तक औरतें पहुँच ही नहीं पाती हैं। एंड वन मेजर क्वेश्चन कम्स अप इज कि वाई इज़ दैट नेगेटिव एटीट्यूड एग्जिस्टिंग
amongst the police force, amongst the services, which causes that fear, which causes that intimidation amongst women? Okay. I think, can you hear me? Yeah, it's fine. I think the lack of fear is kind of an obvious thing because all of us get intimidated by some spaces. Hospitals, police stations, courts. They are intimidating by the way they are designed. And also, I think in all these places, especially these three places, because of the volume of cases people are handling, they become so clinical, they appear insensitive. Even sensitive people appear insensitive because they're very clinical. I remember when I started the rape crisis cell in Commission in 2005, the first few days we had no cases because nobody knew who we were and people were not giving cases. There was a lot of enthusiasm. But by the time we exited that program in 2011, we had about 1,200 cases. And I could see we ourselves, one of the reasons we exited was because we had become clinical. Because it was kind of, it had become very, become very routine for us to hear these cases again and again. And that's why I feel even in Mahila court, if you have a court dealing with women's violence cases all the time, they tend to become clinical. And also we start judging this. For example, if you have a case, I'll speak from our own experience, not judging other people. In our when we ran the rape crisis cell, we would get cases where a child was severely violated and some of them had very serious health issues post that. And as against that, you'd get a case of molestation. That's also violence. But then the amount of empathy we would have for that other case would naturally be lesser than this child who suffered violence, because we would see the difference between the two cases. And I think that's what happens I'm saying, while ignoring the fact that there is corruption, there is prejudice, there is bias, there is all kinds of other, and total lack of sensitivity. These are all given. Even if you leave all of that out also, the whole clinical way in which the cases are get to dealt with. So it's important to have, for all service providers, a kind of a debriefing. They need to be able to themselves get out of the process that they are going through. For example, and it is mandatory in many companies who deal with cyber crimes. So when you have these big service providers, intermediaries, where there are people looking at online abuse within their platforms, and there are humans viewing this on a regular basis, they are sent compulsorily every 3 months for counseling themselves, so that they get debriefed from what they've seen, and they come back and they're able to come back to the work that they're doing. It's important for all of us to have this. I think it's important for ASHA workers to have that. सीमा जी ने जो किया था, इतना उन्होंने शेयर किया, और आशा वर्कर आप दिल्ली में हैं, आप बहुत मेहनत होता है, लेकिन आप ये देखिए जो विलेजेस में जो आशा वर्कर होते हैं उनको तो एक एक कॉल इतनी दूर दूर में जाना पड़ता है, कुछ समय के बाद खुद थक जाते हैं, उनके पास उनकी जो सैलरी मिलती है बहुत कम है, तो उनकी इंसेंटिव क्या है काम करने का. So these are all challenges that we have, and the same applies for all of the spaces which are service providers. So I think one of the things we need to address is to make sure that they are regularly energized in some way or the other. There's some incentive, so they're available for providing services. It's one thing to say that sensitize them, but look at the conditions under which we are allowing them to work. Are we making sure they're competent to provide the service? I'm not justifying their insensitivity. I'm not justifying their lack of ability to provide that service, but I'm also challenging the system's inadequacy to provide them the support system. Like Neelam ji is a prosecutor. मैं कुछ बहुत साल पहले जानने के लिए कि sexual assault cases बच्चे का और महिला का कैसे चलता है, विदेश गई थी just to check. So I interned in an office in the US, in New York for 5 weeks. तो उनको prosecutor को हफ्ते में 2 केस आते थे, और हमारी prosecutor को दिन में 50 आता है. You look at the volume. And what support do our prosecutors get? Nothing. Law clerk में computer तक नहीं मिलता है ना, कुछ भी नहीं. So how do we expect them to provide services? So we need to look at the holistic thing and make sure that they're able to provide service. And coming then to your question of, if I'm able to provide service effectively and professionally, people will not hesitate coming to me. And that's the example of rape crisis cell which I give. I always tell them, because when we started rape crisis cell,
अभी तो विमेन DCW हैज़ टेकन इट टू अ डिफरेंट लेवल. जब हम लोग थे, मैं एक अकेली और मेरे पास 4 इंटर्न्स थे. दैट्स हाउ हमने शुरू किया था उसको. तो हमारे पास जो रिसोर्सेज की इतनी कमी थी, इन स्पाइट ऑफ दैट, विदाउट प्रॉमिसिंग एनीथिंग. अभी विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम अभी बना है ना, इन द लास्ट फ्यू ईयर्स. हमको इन माई टाइम, दैट्स 2005 to 2009-10 when we were there, compensation that was being given, the maximum compensation that was given to a victim was 10,000 rupees maximum, and that was given in installments because we didn't want families to misuse it, because होता था कि कुछ लोग उसको misuse करते थे. 10,000 रुपये over a period of 3 months हम देते थे. वो परिवार आती थी हमारे पास 2-3 बार वो पैसे लेने. So look at the kind of, but in spite of that, in the 5.5 years that we were in the cell, the conviction rate went up by 29%. And it's not a joke, because it was 11%, 12% in 2005. It went up to significantly high percent conviction rate. Why? Because children and women were willing to come and depose. They just needed that hand-holding. And if the system provides hand-holding, more people will come forward to seek service. I mean, it's a natural thing. I mean, it's something that I think I always feel, always question yourself, what will you do in a situation of that kind, and then you'll be able to provide the service much better. Because if I cannot access this room to seek a service, why do I expect somebody else to be able to do it? Because they are just like me. And that's a challenge we have. Our system should, and by system I'm using a very generic word, whether it's a women's commission, or an ASHA worker, or a paralegal worker, or a police station, or a court, or any such place, should not intimidate the person who comes there. But the moment we start being intimidating, if I get afraid to talk to the police, I always used to, I remember a conversation I had with a colleague of mine many years back when I was new to Delhi. And new to Delhi, I'm from Bangalore, so I would hear all kinds of stories about Delhi. So I would tell her that, I feel safe when I look at a policeman. And she told me that I feel unsafe the moment I see a policeman. And that's and look at the paradox. So people in uniform can either give us comfort or give us as much discomfort. And that because of the way we are perceiving them. And so if we do not improve our service delivery spaces, people will continue to be intimidated. And I don't think we can blame somebody. I remember a journalist had asked me recently in Manipur, why are women not filing FIRs, sexual violence? I said, when you are in that kind of situation, FIR is the last thing that is in your mind. You want to save yourself, you want to protect yourself, and then you should be able to trust that person that he will write your FIR in the way you want. ऐसा ना हो कि आप complain करने जाए और आपके खिलाफ complain हो जाए. That also happens. So these are some of the things that we are doing. I congratulate Neelam and the entire team in the Women's Commission to take it to a level that you have taken. Because Mahila Panchayat तभी भी थी, and उस टाइम पे शुरू किया था, and then I'm so happy it is continued. Because क्या होता है, political party बदल जाती है, programs बंद हो जाता है. And I'm so happy कि Women's Commission ने ऐसा politics नहीं खेला. जो पहले शुरू किया था, उसको not only are they carrying it further, उनको इतना अच्छा किया है, we couldn't even imagine. मैं imagine नहीं कर सकती नीलम जी, जब मैंने शुरू किया था कि मेरे पास 50 काउंसलर होंगे, 5 लॉयर तक भी मुश्किल था उस टाइम पे, और आपने उसको कहाँ से कहाँ तक लेके गए. I really congratulate all of you for that. I must say about Aparna ji, जो एक्चुअली रेप क्राइसिस सेल कमीशन का है, जो ये इनिशिएट भी होता, दिस वाज ऑल बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स. हाई कोर्ट की एक जो हम आज काम कर पा रहे हैं, जिसके लिए हमारे काम को कोई चैलेंज नहीं करता, आज की डेट में हमारी लॉयर्स कोर्ट में हैं, वो सब मैं क्रेडिट अपर्णा जी को देती हूँ. क्योंकि मैं अगर कुछ होता है कि आप दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन के लॉयर को क्या लोकस स्टैंड आया है, तो मेरे पास एक ही दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है डिवीज़न बेंच का, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन वर्सेस दिल्ली पुलिस. और वो जो ऑर्डर है उसमें जो कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी रेप क्राइसिस सेल को, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन को, CWC, सभी स्टेक होल्डर्स को, हम जो काम कर पा रहे हैं वो इन्हीं के कारण कर रहे हैं. वो जो ऑर्डर ऑब्टेन कराया वो अपर्णा जी ने ही कराया, तो इसलिए मेन क्रेडिट इन्हीं को जाता है. थैंक यू सो मच. Thank you. So yeah, I think we started talking about normalization of violence amongst women, and as Aparna ji pointed out, there's also normalization of the entire process among service providers. तो उन दोनों को debunk करना बहुत ज़रूरी है कि
कहीं पे भी वायलेंस को नॉर्मलाइज ना किया जाए, ना तो जो सह रहे हैं उनके बीच और ना ही जो उनकी मदद कर सकते हैं उनके बीच. I think that's a great learning for all of us here, and thank you to all the panelists for such wonderful conversation and insights and experiences they've shared with us. Thank you. All right. Thank you to all of you for taking the time out on a Friday afternoon and evening and spending this time with us. Before we move on to tea, I want to say a thank you to all the panelists thank you for sharing your experiences. Thank you to the audience for keeping the conversation so engaging. As the project comes to an end, and before we move on to the next phase of this project, I wanted to also introduce you to the team behind this project. They are the ones who've been the driving force. They've put this event together, but they've also been the ones tirelessly working behind the scenes for the last 3 years to put together so many of these structures. So Tanima, as you've all met her, she's the one who led the program. I have, if I may ask you all to stand up, I have Aparmita, Niyati, Pooja, Jamyang, and Priyanka. So these are the faces behind the project, and it's been a wonderful journey for me personally to have worked with all of them, and we look forward to seeing where this project goes. And I would also like to take this opportunity to thank all the project partners. Many of them are here, a lot of ASHA workers and paralegal volunteers. If you could please stand up. Thank you. So thank you for all the work that you've put in, and we look forward to further collaborations. So please join us for tea now, and we can continue the conversations one-on-one. Thank you.